मैं घर नहीं गया था, मैं गया था 7:40 में निकला है, कहाँ से था। मैं सोचा कि अब है नहीं, आप तो वहां से वो हो गए। हेलो। ऐड करने के लिए बोला ही नहीं गया था मुझे। नहीं नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बताया कि। हाँ, पैनलिस्ट की लिस्ट है। एक मिनट। नहीं तो मैं हमें तो बोला ही नहीं गया था पैनलिस्ट ऐड करने के लिए। नहीं नहीं, पैनलिस्ट मैं। अच्छा, पैनलिस्ट को। अच्छा, पैनलिस्ट को ऐड करनी है। मैंने तो। अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट में ऐड करके बताता हूँ। 9:53। ठीक है। यार अजीब बोलते हैं इन लोग। अब बोल रहा है कि पैनलिस्ट क्यों नहीं ऐड किए तुम। कॉल करके उस समय कुछ नहीं बोला। अमित श्रीवास्तव करके कोई है, कि पैनलिस्ट क्यों नहीं ऐड किए तुम। अरे भाई।
माइक ऑन कर। ओके, पर सर आप जब आगे हो रहे हैं तो आप मिनिस्टर साहब के सामने से आ जाइए। अच्छा, इसको हटा सकते हैं यहाँ तक? थोड़ा सा इधर कर लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है। अभी ओके अभी ओके, ठीक है। राइट राइट। हाँ सर, अभी अब ठीक। आप कंफर्टेबल होके जैसे बैठेंगे आप वैसे बोलिए प्लीज। 29 ministries, 20 mini sections, more than 100 faculties, and 25,000 participants. लेकिन इसमें जो है 3। हाँ हाँ जी सर, रेडी हैं हम लोग? हेलो, हाँ जी, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर, आप थोड़ा और अपने पास माइक कर लीजिए यदि इजी है तो। थोड़ा माइक और अपने पास कर लीजिए सर। हाँ हाँ ठीक सर, आप अब इजी हैं तो आप एक बार ऑडियो चेक कर दीजिए प्लीज। म्यूट है सर। म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी हाँ बोलिए सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, जी ठीक है स्पष्ट सर, ऑडियो वीडियो ठीक है सर। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब हम शुरू करेंगे प्रोग्राम तो एक टैक्स प्लेट आपको दिखाई देगी जो आज का सब्जेक्ट है, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। वो आपके लिए क्यू पॉइंट होगा। जैसे ही वो टैक्स प्लेट हटेगी प्रधानमंत्री जी दिखाई देंगे, आपको फिर वेलकम करना है सर। ठीक सर? हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट में सर जब सर धन्यवाद करेंगे तो हम वो ही टैक्स प्लेट आपको दोबारा देंगे और हम आउट हो जाएंगे। जरूर। तो मैं आपको वो टैक्स प्लेट क्यू पॉइंट के लिए दिखा देता हूँ सर। अश्विनी टैक्स प्लेट दिखाओ सर। ये वाली टैक्स प्लेट आपके लिए होगी, ये क्यू पॉइंट है। इसका मतलब है सर प्रधानमंत्री साहब रूम में आ गए हैं, जैसे ही ये हटेगी आपको प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे। यहाँ से प्रोग्राम शुरू करेंगे सर। जी जी। ठीक सर, थैंक यू सर। अभी मेरी आवाज सुन लीजिए। हाँ जी बताइए। माननीय बोलिए। प्रधानमंत्री जी। हाँ ठीक है सर, ऑडियो वीडियो ठीक ठीक है है, बिल्कुल। सर एक ठीक चीज ठीक। और सर, जो आप एक बार अनाउंस कर दीजिएगा सर, जितने भी लोग कैमरा ऑन नहीं किया है सर वो कैमरा ऑन कर लेंगे सर। वो सारा ब्लैक दिख जरूर रहा है। जरूर जरूर, हम बोल देंगे। हाँ थैंक यू सर। मतलब जब रिक्वेस्ट भी टू, सब लोग जुड़ेंगे तो सब कैमरा ऑन रखें अपना ना प्लीज। I request all our colleagues who have joined, please turn on the cameras and mute your mics, especially all थैंक the यू सर। ministries. राइट सर, थैंक यू सर। Thank you, thank you. क्या हुआ? हाँ? All the panelists, please turn on your videos. नहीं, ये ठीक है आपको। SP Singh साहब, श्रीकांत विश्वनाथन जी, मंत्री जी अनिल को याद दिला कंबोज दीजिए एक can बार। get out of this. IFS DEA राहुल सिंह जी, डायरेक्टर DEA, दो श्रुति राय जी, वो क्या नाम है? NIUA अमित शिखा सर, अरोरा जी. एक बार जल्दी से विंडो दिखा दो। I think a lot of people are. Amrit Abhijat, can you turn on your video? अमित सर, Panelists, please turn on the video. SP Singh, our own colleague. नहीं सी। हाँ अमित सर, और विंडो दिखाओ। Shruti Rai, madam, turn on your कैसे video. करेंगे भाई, हम तो टोटल में चेक करेंगे। Debolina ji, turn on your video. All of you, please turn on your videos. संजय मुखर्जी साहब, उनका वीडियो ऑन नहीं है. प्रोफेसर शाश्वत बंदोपाध्याय, काइंडली टर्न ऑन योर वीडियो. अमित जी, सर अमित जी, नहीं एक तो ये 10 विंडो आप दिखाओगे किशोर मुझे। रावत, जब टर्न तक ऑन योर फोन पे वीडियो. सर, फोन पे आइए, फोन पे। अच्छा प्रोफेसर शाश्वत.
वो राइट CTO साइड में। सर 1 घंटे से चल रहा था सर, तो थोड़ा आपको अलाइन कर, आप बैठिए, मैं थोड़ा करा देता हूँ। हाँ ठीक है। बस सर अभी 3 मिनट में शुरू हो जाएगी सर। हेलो सर, हेलो हेलो। Kindly turn on the cameras, mute the mics, please. We still see a lot of blank cameras. Session 7, Gaje. I see Mr. Manish Jain, Yogesh Singh, VCDU. Thank you. Hari Kumar Janki Raman. Rahul Singh, DES, still, I think, got the camera down. There are some microphones on. Kindly turn them. Sir, kindly turn off your camera, sir. Gopi sir, please. There are a few others. Deepak Singh, I think. Deepak Kumar Singh. Dominic ji, Shilpi ji, I'm seeing again a blank camera. Shilpi ji, Jane Dominic. There are 2 blanks. Session 7, Gaje, INC HQ something. NCERT, that is NCERT. Acha. There is Deepak Kumar Singh. Kindly turn it on. This meeting is being recorded. जी सुरेश कपूर जी। Deepak Kumar ji, kindly turn on. Thank you. Munish, NIC headquarter. Devashish plus Prusti. I'm just reading out names, please don't mind, but these are the blank screens we see. There is one Mr. Ray. I'm not able to read the name clearly. In water cleanliness and sanitation, under that box. Ministry of Ports, the chair is empty. Kindly. There is Isha.
Water, cleanliness and sanitation, there are 3 speakers, panelists who are not putting on their mics. Can that be immediately? Shilpi ji? Just at the side, so I'll join in right away. Thank you. Thank you. Once again, I request everyone to turn on your cameras, please, and mute all the microphones. Primarily, all the secretariat offices have been given the links for microphones, so kindly ensure that they're all turned off. We will be receiving the presence of the Honorable Prime Minister in just a couple of minutes. So kindly, all of you, please be in your seats. Yes, sir. Yes, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। बजट घोषणा 2025-26 के बाद आयोजित की जा रहे पोस्ट बजट वेबिनार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वेबिनार अर्थव्यवस्था में निवेश, सुगम जीवन और सुगम यात्रा यानी इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ ट्रैवल, लोगों में निवेश यानी इन्वेस्टिंग इन पीपल और नवाचार में निवेश इन्वेस्टिंग इनोवेशन के विषय में आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य सभी संबंधित हितधारकों स्टेक होल्डर्स को सरकार के दृष्टिकोण से अवगत कराना और उनके रचनात्मक विचार जानना है। इस वेबिनार में 29 मंत्रालय, 29 सत्र में लगभग 100 पैनलिस्ट और 25,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं। इस वेबिनार में बजट के 43 अनुच्छेदों पैरा पर चर्चा होगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी मार्गदर्शन करें। नमस्कार, आप सभी का इस महत्वपूर्ण बजट वेबिनार में स्वागत है, अभिनंदन है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, ये एक ऐसी थीम है जो विकसित भारत के रोडमैप को डिफाइन करती है। इस साल के बजट में आपको इसका प्रभाव भी बहुत बड़े स्केल पर दिख रहा है। इसलिए यह बजट भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट बनकर सामने आया है। हमने इन्वेस्टमेंट में जितनी प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज को दी है, उतनी ही प्राथमिकता पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन को भी दी है।
आप सब जानते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग और टैलेंट नर्चरिंग ये देश की प्रगति के लिए फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। इसलिए अब विकास के अगले चरण में हमें इन क्षेत्रों में और ज्यादा निवेश करना है। इसके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स को आगे आना होगा, क्योंकि ये देश की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है और साथ ही ये हर ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का भी आधार है। साथियों, इन्वेस्टमेंट इन पीपल का विजन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: एजुकेशन, स्किल और हेल्थ केयर। आज आप देख रहे हैं भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इनके कारण आज भारत का एजुकेशन सिस्टम 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और पैरामीटर्स को मैच कर रहा है। साथियों, सरकार ने 2014 से अब तक 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी है। हमने 1000 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान किया है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो हमारी इंडस्ट्री की जरूरतों पूरी कर सके। इसमें हम ग्लोबल एक्सपर्ट से मदद लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे युवा वर्ल्ड लेवल पर compete कर सके। इन सब प्रयासों में हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया की सबसे बड़ी भूमिका है। इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक दूसरे की जरूरतों को समझे और उन्हें पूरा करें। युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, उनको एक्सपोजर मिले, उन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना होगा। हमने युवाओं को नए अवसर और प्रैक्टिकल स्किल्स देने के लिए पीएम इंटर्नशिप स्कीम शुरू की है। इस योजना में हर स्केल पर ज्यादा से ज्यादा उद्योगों की भागीदारी हो, हमें ये सुनिश्चित करना ही है। साथियों, हमने इस बजट में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों की घोषणा की है। हम अगले 5 सालों में मेडिकल लाइन में 75,000 सीटें जोड़ने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स
टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। डे केयर, कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर को लास्ट माइल तक पहुंचाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे लोगों के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के भी अनेक नए अवसर बनेंगे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए आपको उतनी ही तेजी से काम करना है। तभी हम बजट घोषणाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। साथियों, पिछले 10 वर्षों में हमने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट को भी फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ देखा है। आप जानते हैं 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 90 करोड़ तक हो जाने का अनुमान है। इतनी बड़ी आबादी के लिए प्लान अर्बनाइजेशन की जरूरत है। इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने की पहल की है। इससे गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। हमारे शहर सस्टेनेबल अर्बन मोबिलिटी, डिजिटल इंटीग्रेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान के लिए जाने जाएंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर को, खासकर रियल स्टेट और इंडस्ट्री को प्लान अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन जैसे अभियानों को भी आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ काम करना है। साथियों, आज जब हम अर्थव्यवस्था में निवेश की बात कर रहे हैं तो हमें पर्यटन की संभावनाओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पर्यटन सेक्टर का हमारी जीडीपी में योगदान 10% तक होने की संभावना है। इस सेक्टर में करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। इसलिए इस बजट में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 डेस्टिनेशंस को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा। इन डेस्टिनेशंस में होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने से ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे के लिए मुद्रा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। हिल इन इंडिया और लैंड ऑफ द बुद्धा, इस अभियान के माध्यम से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। भारत एक ग्लोबल स्तर का टूरिज्म एंड वेलनेस हब बने, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो इसमें होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अलावा पर्यटन में दूसरे सेक्टर के लिए भी नए अवसर हैं।
इसलिए मैं कहूंगा हमारे हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हेल्थ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करें। ये अपॉर्चुनिटी तो ग्रैब कीजिए आप। योगा और वेलनेस टूरिज्म के पूरे पोटेंशियल को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। एजुकेशन टूरिज्म में भी हमारे पास काफी स्कोप है। मैं चाहूंगा इस दिशा में विस्तार से चर्चा हो और एक स्ट्रांग रोडमैप के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। साथियों, देश का भविष्य इनोवेशन में किए जा रहे निवेश से निर्धारित होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई लाख करोड़ रुपए की ग्रोथ दे सकती है। इसलिए हमें इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना है। इस बजट में एआई ड्रिवेन एजुकेशन और रिसर्च के लिए 500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक रिलायबल, सेफ और डेमोक्रेटिक देश जो एआई में इकोनॉमिकल सॉल्यूशन दे सके, विश्व को उसका इंतजार है। आप इस सेक्टर में अभी जितना इन्वेस्ट करेंगे, भविष्य में उतना ही एडवांटेज आपको मिलेगा। साथियों, भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई कदम उठाए हैं। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड पास किया गया है। इसमें डीप टेक फंड ऑफ फंड्स के साथ उभरते सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा। आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 रिसर्च फेलोशिप की व्यवस्था बनाई गई है। इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिभाशाली युवाओं को मौका मिलेगा। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से इनोवेशन को गति मिलेगी। भारत को रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमें हर स्तर पर मिलकर काम करना होगा। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन, और मैं आशा करता हूं इस सब में आप सब आगे आए। ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध मैन्युस्क्रिप्ट्स हेरिटेज को संरक्षित करने की घोषणा बहुत ही अहम है। इस मिशन के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदला जाएगा, जिसके बाद एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जिससे दुनिया भर के स्कॉलर्स और रिसर्चर्स भारत के हिस्टोरिकल और ट्रेडिशनल नॉलेज और विजडम को जान सकेंगे। सरकार द्वारा भारत के प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को संरक्षित करने के लिए नेशनल जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारी इस पहल का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों के लिए जेनेटिक रिसोर्सेज
और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हमें इस तरह के प्रयासों का दायरा बढ़ाना होगा। हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स और सेक्टर्स को इन प्रयासों में भागीदार बनाना चाहिए। साथियों, फरवरी में ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के शानदार ऑब्जर्वेशंस भी हम सबके सामने हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच, 2015 से 2025 के बीच इन 10 वर्षों में भारत की इकोनॉमी ने 66% की, यानी 66% की ग्रोथ दर्ज की है। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। ये ग्रोथ कई बड़ी इकोनॉमीज से भी ज्यादा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमें सही दिशा में सही निवेश करते हुए आगे बढ़ना है। अपनी अर्थव्यवस्था का इसी तरह विस्तार करना है और इसमें बजट घोषणाओं के इंप्लीमेंटेशन की भी बड़ी भूमिका है। आप सभी की अहम भूमिका है। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों से बजट घोषित कर करके आप अपना कर लो, हम हमारा कर ले, वो परंपरा हमने तोड़ दी। बजट बनाते से पहले भी आपके साथ बैठते हैं, बजट बनने के बाद भी, घोषित करने के बाद भी जो चीजें सामने आती हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हम आपके साथ बैठते हैं। शायद जन भागीदारी का एक मॉडल बहुत रेयर होता है और मुझे खुशी है कि लगातार प्रतिवर्ष इस एक मंथन के कार्यक्रम को बल भी मिल रहा है, उत्साह से लोग भी जुड़ रहे हैं और हर एक को लगता है कि बजट के पूर्व जितनी बातें हम करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें बजट के बाद इंप्लीमेंटेशन में उपयोगी होती है। मुझे विश्वास है हम सबका ये सामूहिक मंथन हमारे सपनों को, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूर्ण करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। अभी से सर 2 o'clock, from 2 o'clock. We have about 7-minute break. Yes. 7 मिनट अपना breakout session शुरू।
हेलो। हाँ, आपकी नहीं आ रही है। Do that. Hello, Shubham. हेलो। Hello. स्कूल एजुकेशन आपकी Audible? आवाज आ रही है? हाँ, ऑडियो वीडियो इज क्लियर। भेजा था ना मुझे। ऑडियो वीडियो इज क्लियर। यस यस। एक मिनट, एक मिनट। अटेंडेंस कर दीजिए ना। स्क्रीन मिल रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। मूव हो रहा है? हाँ, मूव हो रहा है। ओके। ओके।
Hello. Hello. Good afternoon. Actually, why they have given 2:40? We would have also started at 2:50. 3 तक PM बोलेंगे, तो उसके बाद उन्होंने अगर 10 मिनट का गैप दिया फॉर हेलो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा जो जो है। श्रीनिवास, आर यू प्रेजेंट? अशोक कुमार, नाजुक आप बैठे, अशोक कुमार एंड वेदिता के लिए। नाजुक आप मेन चेयर पे बैठ जाइए। हम थोड़े अटकाएंगे। आई कैन सी यू, जस्ट रिस्पॉन्ड, आपकी वॉइस आ रही है कि नहीं? अभी ट्राई करो, नहीं आएगा। नहीं तो अमित दिल्ली, स्वरूप प्लीज को बोलो, रिस्पॉन्ड। सुनो, नहीं तो अमित स्वरूप आई को कैन बोलो सी करने समवन के लिए। सिटिंग, जस्ट रिस्पॉन्ड। आपका म्यूट है अभी दिल्ली। वो बोलने की कोशिश कर रही है, बट आई थिंक इट्स म्यूट। Can you check Nazu Kumar, SPD, Samaj Shiksha from Delhi? नाजुक आप मेन चेयर पे बैठ जाइए, सर तो आ नहीं रहे ना। हाँ, ओके ओके, ठीक है। बैठ जाइए। बैठ गया यार, चेयर ही तो है। भानुप्रभा, हैव यू जॉइंड? इसको हटा मैं साथ। स्वप्निल, स्वप्निल टिम्बे, हाय श्वेता। रंजीत सर, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, आई एम प्रेजेंट। सर आपका वीडियो ऑन कर लीजिएगा सर। It has not asked you for any password. You can. Then yeah, no, you can hear me because you are an attendee right now. श्रीनिवास, have you joined? इसमें श्वेता जी दिख रही है? Okay, let me check very quickly. Excuse me. आप एक बार चेक करेंगे, श्वेता दिख रही है? नहीं ज्वाइन नहीं कराना है। आप ये जो लिस्ट दिख रही है ना आपको लोगों की, ये नेम्स जो दिख रहे हैं, इनमें श्वेता है इसमें?
Professor PVM Rao. Shweta, I'll just ask one of my team members to help you. वो अभी काफी लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है? हाँ. Professor PVM Rao, IIT Delhi. नहीं, it's the same link just जो हमने बाकी panelists को दिया है. That's how you're able to hear me and probably see the Dhananjay screen. Pandey ji. Right? Are you able to view what's happening? हाँ, but you should show it. If you put the password only, then you'll be able to speak. I wonder why that didn't ask you. Acha, I'll ask someone to just help you, call you. Kiran Kumar HS from Karnataka. Ivan Dorji. 220 बोला था actually हमने इन सबको. जी sir, hello sir. मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिस्ट Prabhala SS, UNICEF. उसे पैनलिस्ट पे ऐड करने हैं. हाँ, I just heard the same from another panelist, Ms. Shweta, कि क्या issue. I'll just figure it out and call you back, sir. ठीक है. अंजलि प्रकाश. मेल का ज्वाइन कर रखा एक issue हो रहा है. People are saying कि वो जब join कर रहे हैं तो it's straight away taking them to a webinar mode. Not as panelists. Password मांग ही नहीं रहा है.
श्रीनिवास नहीं, मैंने अभी भेजा है व्हाट्सएप पे, वो सही आएगा देखो। स्वप्निल मीटिंग इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। नंबर और पासवर्ड से करो, एक बार ट्राई करो, होगा। Good afternoon, everyone. I've joined from Meghalaya. Thanks, Swapnil. Thanks.
Srinivas, kindly show your face and speak. Srinivas. Srinivas, you have joined. So participating user, participation password. Sir, but my voice is not getting, sir. I'm checking the settings. వినపడతా ఉంది ఇప్పుడు. Yes, sir. Okay. Check out sound. Acha, Srinivas, can you describe how you joined it? Because NIC is having some trouble. So did you face any trouble by joining? Sir, no, sir. Sir, am I audible now, sir? Yes, you clearly are. Join, sir. बैकड्रॉप बैनर How? कांस्टेंट रखने की वजह से वो कट पेस्ट में जा रहा है ना सर, तो Hello? इम्पोसिबल. From the The main link that I central session action. send you on WhatsApp, you Huh. join in that and send the password. Yeah, that's what I've just done. I've given your email ID for that only. Srinivas, आपने Sir, वो link ठीक है, join करके fine. password डाला. Do a quick check if you still have. Sir, I have received one mail yesterday, sir. Using that password, I have joined, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir.
Shweta ma'am, can you confirm? नहीं उनको कॉल किया श्वेता मैम को, वो एक्सेप्ट करने के लिए इनवाइट किया. Shweta, are you there now? नहीं. You said that she's there, but we can't hear her. Are you there, Shweta? Can you hear us? Yes. Am I audible? Yes. Can we Yeah. have her focus? Oh yeah, she's there. Okay, great. Sorry for the technical mismatch. No worries. It always happens. It's fine.
You able to operate? Yes, sir. Good afternoon to all the panelists and the huge wide audience that we have in the states, in the form of states and UTs, in the form of the officials of the education department, as well as the school principals, headmasters, teachers, students, etc. As we move towards our journey of creating a Viksit Bharat with a $5 trillion economy, the entire responsibility of creating and nurturing a generation of entrepreneurs, innovators, problem solvers, in line with the NEP spirit of scientific thinking that is to create among the students. The primary responsibility for all this lies with the Ministry of Education and more so on the Department of School Education and Literacy. So today, all of us have gathered here in order to think and discuss and debate the way forward of our budgetary announcement to create another 50,000 Atal Tinkering labs in the country, in the government schools over a period of next 5 years. We have a very distinguished panel of panelists here, all of whom are experts and have contributed significantly in this sector. So before we start with the presentations, I'll just take a minute to introduce the panelists to all our audience. We have amongst us Professor P.V.M. Rao, who is a professor and an expert from IIT Delhi. Dr. Anjali Prakash, who has implemented the scheme and is currently the chairperson of Learning Links Foundation. Dr. Pramila S.S. from UNICEF, an expert in educational programs. Mr. Kiran Kumar, ATL mentor and regional mentor of change in Karnataka Atal Innovation Mission. Ranjit Deol, Principal Secretary School Education from Maharashtra. Ashok Kumar, Secretary Education from Delhi. Vijita Reddy, Director Education from Delhi. Ms. Bhanu Prabha, Secretary Education from Ladakh. Mr. Swapnil Tembe, State Project Director Meghalaya. D. Srinivas Rao, SPD Smagra Shiksha from Andhra Pradesh. Ms. Renu Singh, Principal, Air Force Hebel, Bangalore, Karnataka. Mr. Rohit V, Principal and in charge of ATL in Shimoga. Mr. Ivan Dorji Lepcha, ATL Vice Principal from Sikkim. Ms. Monica Gauri, ATL in charge from Jammu and Kashmir. Dhananjay Pandey, ATL in charge from Government Secondary School, Chhattisgarh. It's my pleasure to introduce Ms. Shweta Khurana, Senior Director, APJ Government Partnerships and Initiatives, Global Government Affairs Group, Intel Corporation. So I would request Ms. Shweta to introduce the subject to all of us. Thereafter, we will be running on a very tight schedule where we'll have 6 specific questions to be debated upon. So Ms. Shweta Khurana, please. Thank you so much. If you can share the presentation. Great. If you can go on to the next one, please. Good afternoon, everyone. Such a pleasure to be here with all of you. I'm here to present on behalf of the Atal Innovation Mission and how the Honorable Finance Minister in the Union Budget speech has announced that the setting up of 50,000 ATL or Atal Tinkering labs in government schools in the next 5 years, which is to build a generation of young innovators in India. If you can go on to the next foil, please. I remember the first Atal Tinkering Lab. It was inaugurated on the 25th December 2026 on Shri Atal Bihari Vajpayee's birthday. And ATL is a visionary initiative of the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, to create a culture of innovation and entrepreneurship, to encourage curiosity, to foster a scientific temper among young minds. Can go on to the next one, please. The vision is to cultivate 1 million children in India as neoteric innovators. The word neoteric was specifically selected because it means new innovations, or we can even say fresh and original ideas. The thought behind this was to allow school students to create indigenous solutions to solve the problems they would see in and around their surroundings, now whether that is their home, their school, or their communities. The question was that if they can access the materials they require to build these solutions in Atal Tinkering Labs, which was being established by the Atal Innovation Mission, how would it change their mindset to become young innovators, to really go on to the path of learning science and technology? Now, these labs are very different from regular physics or a chemistry or a computer lab. And the students can learn new age skills like design mindset, computational thinking, adaptive learning, physical computing, etc.
And of course, AIM in the first phase has established 10 ATLs pan-India, which is highly commendable. Can you go on to the next one, please? If you look at the setup and the structure, right, the application basically comes from either a government or a local body or a private school. And then there are certain requirements when it comes to the infrastructure. What is the kind of square footage which is required, whether it's in a plain area or a hilly area? What is the built-up area? What are the science and math faculties which are there? And then there is a whole list of equipment and learning modules which comes across with the package. The funding of this was envisaged in a way that there is a capex and an opex. The capex is basically to allow for the establishment, and the opex is to ensure sustainability over the years, over 5 years per se. Can go on to the next one. So it is highly commendable when we look at the impact of what has really happened. And I would want to congratulate the AIM management because the program has achieved some very impressive milestones and has become a national movement. Quantifying the impact, we can share that 1.6 million projects were created, engaging more than 1.1 crore plus young innovators, which is absolutely fantastic. But even more heartwarming is the impact that we've personally witnessed on the field and how this movement has impacted lives of young students. In fact, I remember a girl, Tina Sahu, in class 8th, from the very first cohort, from the very first ATL at Salwan Girls Senior Secondary School, which is a government-aided school. Tina's first interaction with census and censification happened at an ATL, which inspired her to frame her career choices. And 9 years later, today, she's working as a data analyst, and her LinkedIn reads that she's on the path to become a data scientist. Now, imagine the power of the scheme where 1.1 crore young students are innovating. And with the current budget announcement, the impact will potentially become 5x more. Can go on to the next one, please. So we can safely say that ATL is revolutionizing the education ecosystem of the country today. With AIM having established 10,000 ATLs, what they've also gone and done is really done a third-party assessment study. There are a lot of figures on this foil, but what I really want to highlight is two. One is 60% teachers have gained leadership experience through ATLs, which is very commendable. And the second is that 84% schools consider ATL as a pathway to attract students to science and technology, which is required in today's day and age as we are moving to a gig economy. Can go on to the next one, please. So the idea is that it just not only allows a student to learn new skills, new age skills, gets them to really work with census and censification, understand emerging technologies, specifically like AI, understand the concepts of entrepreneurship, but they also get a platform where they're getting recognized both at national and international levels, whether it is, of course, through the Honorable Prime Minister or through international platforms where the students get awarded for solving global community problems. So in fact, it has moved so diverse from local to global community that it's a whole realm of body of knowledge which the students have gained in this entire gamut. And then they've gone ahead, they've built startups, they've earned patents. 100 plus ATL students have received their patents for innovation at such an early age while they're still in their schools. Really talks about building India as a knowledge economy, enabling the dream of Viksit Bharat. Can go on to the next one, please. So ATL 2.0, what really is ATL 2.0 and how is it going to be different from ATL 1.0? The idea is that how do we ensure universalization of the knowledge of an ATL, whether that is tinkering, whether that is learning emerging technologies, or whether that is learning concepts of entrepreneurship. Ensuring the advancement in an equitable format in a way that reaches every single nook and corner across the length and breadth of our country, in a way that nobody gets left behind, really realizing the dreams of NEP and putting that into actualization. Can go on to the next one, please. So the objectives and principles of ATL 2.0 have been discussed variably in saying universalization and democratization to the access of tinkering as a skill, and also how it really amalgamates into formal knowledge systems. So there's a lot of conversation which was happening that you have tinkering at one end, you have learning of emerging technologies like AI at the other end, and then you have the subject knowledge at the third end. What if you really bring all of it together?
What if we ensure there is enough integration of concepts of tinkering and emerging technologies while improving formal learning, while improving the learning outcomes for a student who's possibly in a middle school or high school today? The advantages seem to be immense. And then, of course, with the new technological developments, what is really happening is that the idea is not just that how do we formalize and learn, get the students to learn the skills, but also how to apply them. So what is going to happen from a policy perspective? What is going to happen from the curriculum integration requirements? And then the principles of ATL 2.0 is to make this experiential learning space, which has been given to schools and will be given to 50,000 more schools with ATL 2.0, is to really keep regional diversity in mind. When we speak about democratizing the knowledge or universalizing the whole concept of tinkering, the idea is how do we make it very regional specific? How do we make it, and not just from a language standpoint, but also from the, let's say, from an industry standpoint. Every region has its own segment of industries. How do we kind of ensure the integration happens more seamlessly? They have their own experts in place. How do we get those aligned? How do we really look at aligning ATLs to the innovation ecosystem of our country? Because there needs to be a cross-fertilization between school education, between formal school education, formal higher education, informal education, basically ensuring that the learning is immense and prepares the students for future work, which allows them to become a part of Industry 4.0. The third principle is to give an expression to the National Education Policy or NEP 2020, where in fact a lot of concept of tinkering actualizes what NEP 2020 had set out and defined for all of us. And fourth is future of work skills like design thinking, computational thinking, even algorithmic thinking today. And emerging technologies converting to AI, robotics, IoT, or maybe even an amalgamation of these technologies itself, like AIoT, because it's a combination of AI with sensors, sensification, design thinking, and how do you pull it all together to enable a student, to allow the student to learn the skills, to visualize the challenges in and around the communities and go solve them. Can go on to the next one, please. So keeping this in mind, there is this transition of ATL, which is happening to Ministry of Education. The Atal Innovation Mission is headed by the Honorable Education Minister, but within the larger framework of AIM, the expansion, the operations, the monitoring is being transferred to the Department of School Education, Literacy and Ministry of Education. And I'm assuming all the experts, as and when they get into deliberation, will be able to document of how effective this would make, because this is a seamless integration of what has been happening in our schools and the allowing students access to the tinkering facility through the lab itself. You can go on to the next one, please. So we're going to break into a session where 15 participants will be discussing themes in the presence of 21,000 plus attendees, which is absolutely huge and phenomenal. And there are multiple themes of these breakout sessions. Again, just reiterating, the idea is that how do we get ATL 2.0 to achieve the vision of Viksit Bharat? Universalization of tinkering across. And if I have to make it very tactical, I can talk about, how can we get our students to learn the ability to apply math skills to aid in understanding AI or maybe statistics in semiconductors? How do we get our students to understand different type of chemicals which are used in technology hardware? Or how do we get students to understand and build a foundational knowledge of the physics of a device? So those are the kind of skills which would really flourish the minute we talk about integration of everything together. You have the Atal Tinkering Laboratories, you have the formal education system, and the ability to learn any new age emerging technology which comes like artificial intelligence. So these stakeholder groups will discuss questions and the themes identified, which is scope of ATL, scalability, implementation, human resources, and support ecosystem, which is so important to get this entire conversation happening and thriving. The questions have been shared with the participants in advance. The sessions will be attended by a lot of experts, both from the governments, CBSE, Kendra Vidyalaya, Jawahar Navodaya Vidyalaya, PM Shri schools, and state government of leaders. In case, as teachers, school principals, if you're watching this session and would like to share your suggestions, you can write to ataltinkeringlabs.moe@gmail.com. And go on to the next one, please.
So thank you for your time and patience, and I would like to hand the session back to the moderator. Thank you, Shwetaji, for such an illuminating presentation. You have made our task easier. Thousands of heads of school where we propose to sanction ATLs in the coming financial year, they would have benefited with understanding of the concept and the philosophy of the ATLs. The concept note as well as the questions have been shared with the panelists. So depending on their area of expertise, since we will be running short of time and we have to complete our discussion in another 1 hour, I would be requesting a couple of panelists on each of the questions to kindly respond and give their suggestions to the audience and to the members sitting here. We'll begin with the first question. The question number 1, what should a next-gen ATL look like in next phase in terms of infrastructure, design, and components? I would request Professor PVM Rao to kindly share his views. Hi, so am I audible? Yes, Dr. Rao. Okay, so thanks for this opportunity. And I think this is truly amazing that we are going from 10,000 to 50,000. More towards democratization of innovation in the country. I think it's a very big step for the country. So I think if we really look at the first phase of tinkering, I think a lot of effort was more towards tinkering. Maybe it's also a little better to look at beyond tinkering now. Generally what happens is when we look from tinkering to, let's say, other end as an entrepreneur, there are multiple phases. Usually the 3 phases are very clearly identified. One is you first become a maker, then you become an innovator, and then the entrepreneur. So one way to look at is as we expand, is it also possible that maybe all of them becomes maker labs, but some of them, I don't know, can be upgraded or can be identified, which can be a next stage of, more about an innovator, and maybe a very small, which can even be entrepreneurs who can be associated with local incubators to actually show that some of the tinkering work which has started has now reached the people, industry, and society and made a small impact. These numbers won't be very large, but I think giving an opportunity as a part of this would be a very thing. So I think maker, innovator, entrepreneur journey seems to be one thing which we can definitely look at. But I think as we increase the numbers, I think one major challenge which will come is the identifying the large number of teachers and mentors, which is a very important. And I think that is where some of the higher educational institutes such as ours can also play a major role in the sense that we did actually quite a few teachers training programs in the past for NITI Aayog and Atal. And I think we would be very happy. But at the same time, creating online resources, because every time expecting a resource to be available locally is also an issue. Somewhere I think we need a central setup where most of the online resources are available for mentors and teachers to actually do it. So more in the form of, I don't know, MOOCs or webinars would be definitely needed. One very important aspect probably as we are expanding is that can we actually make this attempt also very inclusive, inclusive in 2 senses. First is we actually ran with NITI Aayog a 2 months innovation program in 22 official languages of India. And I think it was really amazing because even if you look at our educational system, it's less than 10% who have either first, second, or third language as an English. So what about that 90%? Maybe we can also look at how do we bring the vernacular aspect, if possible, which is actually greatly helped would be one. And also we just started an attempt to make some of the Atal Tinkering Lab inclusive for people with disabilities, etc. And I think how do we actually redesign or at least some of these labs which are easily available where people get an opportunity. I don't know,
whether it's every lab has to be universal is a bigger question, but at least some of the labs locally available to students with disabilities would be a great idea. And one more thing, which is when we look at the world as it's happening, a lot of tinkering experiments, etc., which were designed in phase 1 has immensely contributed to the STEM education. And actually, we see the enrollments in STEM going up, particularly among girls all over India. But there are also tinkering and innovation possibilities beyond STEM. Like, for example, how do we bring students of arts, social sciences, and commerce also into this? Because not everyone may not be an entrepreneur, but entrepreneurial mindset is very important. And I think somewhere if we can actually bring that would be a good, even in STEM, we have seen some tinkering labs and experiments elsewhere, which are very specialized in biology. Sometimes within STEM, we don't give equal contribution to all of them. So I would say that it's a great opportunity, and I think IITs and higher education institutes would be available anytime in this experiment to play a role, and extremely excited about this effort. Thank you. Thank you, Professor Rao. Mr. Kiran Kumar, any suggestions, please? Yeah, good afternoon, sir. Thank you very much for the opportunity to share my views. I have been an ATL mentor for over 7 years now, and what I want to share with all of you today is based on my first-hand experience working with ATLs and with a lot of student tinkerers and innovators. So I have compartmentalized my inputs into 3 buckets. One is about the ATL design, another is about the layout of the ATL itself, and also about the infrastructure, which includes the equipment and resources. First, let me start with a few inputs related to the ATL design, ATL layout itself. What I've observed is every student is at a different level in their engagement at the ATL. Not everybody is ready to start tinkering or start innovating or becoming an entrepreneur. So some students are good in ideas, some are with tinkering, some are makers, doers, some are more excited about entrepreneurship. So my suggestion for the next gen ATLs is to have a dedicated space for each kind of these students. Somebody who's good in ideas, maybe you should have an ideation lab. Somebody who's good in design, you could have a design lab within the ATL, or it could be a business incubator within the ATL for those students who are interested in entrepreneurship, or somebody who's interested in change making. Some are interested in more social causes and change making. So give them a space within the ATL for change making. And basically what I'm saying is within the space, we need to have this specific focus tools, toolkits, equipments, and resources required by people who are into ideas, people who are into design, people who are into entrepreneurship or change making or innovation. So we need to segregate, not have one common space, but have segregation of spaces. And we should also have a space where students can showcase their projects on a permanent basis. It's like an exhibit where other students can come and see and get inspired from what other students have done. So this is my inputs related to the ATL layout. And let me next give you a few inputs related to the ATL resources and equipment. My suggestion is there are many of the ATLs are equipped with tinkering resources today, which includes electronics, sensors, actuators, microcontrollers, robotic kits, IoT kits, drone kits, and things like that. But we also may need a few additional advanced prototyping resources and tools. And this could be probably given to those ATLs which perform better. Maybe instead of giving everything to everybody, maybe you look at virtual reality and augmented reality headsets, drone and aircraft simulators, laser cutters, maybe voice assistants, or paid licenses to cloud computing tools and resources, or a self-service kiosk. So depending on the performance of the ATLs, you might want to allocate additional budget for the schools to buy these additional equipment. In addition, I would also say that if we need to bring ATL and academic subjects together so that students
also apply the knowledge from academics into with the ATL subjects. So if you could also provide kits like hydroponic kits, aeroponic kits, space exploration kits, and maybe even the regular science kits, physics, chemistry, biology kits, students can use all of these kits to tinker and innovate better. So this is something that is missing today, I feel. And finally, as another point related to the equipment is we also need to bring arts. Today, predominantly, it is about STEM education. We need to make it STEAM education. Maybe it could even be stream education, which includes research also. Research and arts, it becomes stream education by providing digital art creation tools, music composition tools, and many other craft-based prototyping materials. So these were some of my suggestions. And finally, related to the ATL design itself. What I've seen is many new students, beginners especially, get intimidated by the ATL design. When they first approach, there are a lot of resources, equipment all around. They don't know where to start. They will get confused, and they need a lot of handholding. So we need to make it more child-friendly and make it more vibrant and flowing, maybe with a lot of colors and themes. It could be an environment theme, or it could be a nature-based theme, or it could be any other theme, and all the furniture, chairs, tables, whatever props you have, and everything on the walls also had to align with those themes. And one example would be to have some wall murals or some design paintings on the wall that show the journey of a student from a tinkerer to a problem solver to an innovator, a designer, an entrepreneur, and finally becoming a change maker. So that will give a kind of roadmap for students on how they should progress through the ATL. Otherwise, most of the students are lost. They don't know, okay, they think tinkering is the one and only thing in life, nothing beyond that. So they need to understand that. And maybe some photos of the top Indian and global innovators and entrepreneurs and change makers in the ATL also can help. So these are some of the inputs, and I just one or two other small inputs. One is if we can also provide, as Professor PBM Rao mentioned earlier, we need to have a common digital platform for all ATLs so that all the learning resources, it could be certificate courses that for teachers, mentors, students, they can go to this digital platform, they can learn everything there, because a lot of learning happens outside of the physical confines of the ATL. And ATL's time is limited for students. It's only limited to the school hours and things like that. So if you have a common platform, that can be used. And here a lot of content in vernacular languages also can be made available. And if you can also have a scaled down version of ATL, not all the ATLs have to be of the same size. If you could have ATL in a box, ATL on wheels, or a mobile ATL, or a ATL in a backpack, as we used to call, which with basic minimum tinkering equipment, some schools may not be ready for everything that an ATL offers. They may not utilize all the resources that are available. A lot of times I've seen resources just sitting idle and not being utilized. So if you could have a smaller version, scaled down versions of ATL, that schools could get started with that, and they can grow and evolve over a period of time. So these were some of my inputs. So again, thank you very much for giving me an opportunity to share some of my inputs from my ground level experience working with students. Thank you. Thank you, Mr. Kiran. Very, very useful insights. And now we move on to the next question. How can policy frameworks and governance mechanisms enhance participation from state governments, including SERTs and other relevant state-level entities? Since we have the largest number of ATLs in Maharashtra, I would request Principal Secretary Education Maharashtra, Mr. Ranjit Singh Deol, to respond in case he's online. Good afternoon, everyone. First of thing, regarding this ATL Tinkering Lab policy framework and governance mechanism to enhance participation from the states, I would like to divide this in two parts. One is from the point of view from the student and from the teacher's point of view. First thing, I think that if we can have in the policy framework that the teachers should be trained through SERT and DIET, and also we should the continuous professional development training, it should be made part of that professional development training.
So 50 hours of training is required for the teachers. So if that can be part of that, so I think they will be more interested in this. And second is that and there are students who have some thinking which is from their perspective of daily life or daily economic activities within their area. As we are always saying that we should have a tinkering labs based on the industries which are existing in that area. But even in the agriculture side also, lots of students are interested in innovating in agriculture side. So we can have some tinkering labs which are specifically designed for the for agriculture sector also. And second is that there are some NGOs who are very much interested in developing in giving this kind of services to the school. They want to have their own tinkering lab and all that. But if we can have tinkering lab, and if we can engage the NGOs for the softer part of the services, like they can have their people who can actually train the students. And I think I have seen some of the NGOs, they are very much interested in, they are very dedicated people who I think they can help initially in the development of tinkering labs. And one more point was that there should be some standardized models for the tinkering labs, because there are lots of vendors who are always coming out with some of the different ideas and try to influence the locally. So if we can have very standardized model for each kind of tinkering lab, at least 70-80% of the tinkering lab models can be standardized at the highest level with the very renowned people, so that 20% can be given to the local authorities to design on the tinkering modules. And one more point I wanted to say, that if we can have a hub and spoke kind of model, that there can be one tinkering lab which is of very higher standard, so that if there are some students who are actually going ahead in the innovation or something, they can come to in a district level or division level. They can expose that, we can expose those students to some higher kind of tinkering, to the higher kind of labs. I think then it can also we can there can be more innovative projects which can come out of the this project. So these are the few points which I wanted that we should I wanted to put before the panel. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Ranjit, and keep up the good work with the large number of ATLs that you have in Maharashtra. Some of the best ATLs in the country are in Delhi, so I would request Director NCERT Delhi, Nazuk Kumar, to kindly offer suggestions in case she's online. Good afternoon, sir. Sir, I'm Nazuk Kumar. I'm the SPD Samagra Shiksha in Delhi and Director NCERT. Sir, I would like to talk about the procurement, how we can make procurement for ATLs more systematic and more streamlined. Sir, the process, in my opinion, starts from before procurement. We need to have a very specific need analysis and map the various packages to learning outcomes. So if there is a kit that we are supplying to the school, we need to know exactly what we want the child to be learning out of this, or what we want the child to be exploring out of this particular kit, and that should be communicated to the principals, to the trainers, so that everybody has clarity on why we are doing what we are doing. Sir, the second part, pre-procurement, I would like to highlight is that the number of schools and the identification of the schools needs to be done from a very bottom-up approach. A lot of times, the tender is floated, and then the school says, we don't have the classroom, they will give us some kind of storeroom. So that needs to be done beforehand. So when I come to the procurement part, sir, in Delhi, we have a centralized state-level procurement. This results in better costing, a better standardization, better quality checking, and we can ensure that deliveries are on time.
we need to be more updated on the specifications, both in terms of the component and the kits. Within the kits also, what exactly is the specification that we need? That needs to be very well defined, and the terms and conditions also need to be very well defined. And in certain places, we got feedback from vendors that the specifications should be more realistic in terms of costing, so that can be looked into. So then I come to the monitoring mechanism. At every stage, there should be a committee to kind of push it through. This committee should have somebody from the administrative side, somebody from the academic side who looks at the technical aspect of it, and somebody from the finance side with very strict timelines. And the specifications, sir, should be shared with the schools also, so that we can have a committee there where the SMC members or the parents can also be a part of it, to create a check mechanism that whether the kids are just lying in the school or whether they have actually been put into use. Sir, finally, the most important part of it is to make it sustainable. So for this, sir, we need a strengthening component, because creativity and tinkering is such a dynamic process that technology keeps changing, new things keep coming, and our kits might become obsolete very quickly. So there should be a committee to look into this, and to maybe every 6 months or every yearly update our specifications and our the kits and the ideas that we are exploring. And to implement this, we will need a strengthening component in terms of funding, which we in Delhi we had done through Samagra Shiksha. So this needs to be an integrated approach, both in terms of the item and also the capacity building of the instructor who will be looking at it. Sir, and after procurement mechanism also, sir, we should have in place, so that we can get feedback from the stakeholders, from the children themselves, which can be incorporated in the next RFP. And finally, sir, as sir had mentioned, that we propose that there should be a state level, higher level ATL, which is open to any child, even if the child doesn't go to school, if he's feeling like doing something at night, he's getting bored, something like a 24/7 higher level lab, which offers higher level kits, which gives further customization. So that can be looked into, sir. Thank you so much. Thank you, Naluk. Definitely, all the good suggestions would be seriously deliberated upon and kept in mind when we are preparing the policy for implementation for this expansion phase for next 50,000 ATLs. Moving on to the next question, what strategic interventions and institutional mechanisms can ensure availability of qualified teachers for ATLs while equipping them with requisite competencies to enhance long-term impact and operational continuity? Mr. Dhananjay Pandey, in case he is available. नमस्कार सर, जहाँ तक मैं ये प्रश्न समझ पा रहा हूँ, ये एटीएल इंचार्जेस के लिए है। देखिए, ये दो स्पेसिफिक मैं बातें करना चाहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक नाव में पैर रखें और दूसरी नाव को आप आगे बढ़ाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप स्पेसिफिक एटीएल इंचार्जेस के लिए एक स्पेसिफिक स्कूल के लिए एक रखिए। जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ टीचर्स जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनको कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं एग्जामिनेशंस के लिए, करिकुलम्स के लिए और मैनेजमेंट के प्रेशर्स के लिए। और जब तक एटीएल इंचार्जेस बच्चों के साथ उनसे कोरिलेट जब तक नहीं करेगा, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, तब तक ये बात नहीं हो सकती है। मोरओवर मैं समझता हूँ कि अगर एटीएल इंचार्ज हैं तो वो व्यक्ति को एक स्पेसिफिक एटीएल के लिए ही डिप्यूट करना चाहिए ताकि वो बात कर सके। हम अपने हिस्से से ही ये अनुभव सामने आया है, रात को हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो इसका प्रेशर ऊपर नहीं होना चाहिए और एटीएल इंचार्जेस के ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि एटीएल इंचार्जेस अगर स्पेसिफिक नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को कई प्रकार की हमको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो कि टाइम और मनी दोनों की ही लॉस मैं समझता हूँ। तो अगर एक स्पेसिफिक एटीएल इंचार्ज रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो उसके साथ न्याय कर सकते हैं। भरोसा रखना पड़ेगा उस एटीएल इंचार्जेस के लिए।
तीसरी बात मैं कहता हूं कि जो भी एयरटेल इंचार्जेस हैं उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसके प्रति, आरटीओसी के प्रति, किसके प्रति, आरएमओसी के प्रति, ताकि वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को, एयरटेल क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ताकि वो आप बाहर ना जाए, गवर्नमेंट के पास ना जाए कि ये हमारे प्रॉब्लम है और इसको आप सॉल्व करें। तो ये जो चीजें हैं आरटीओसी, आरएमओसी के प्रति उनको जवाबदेही बनाना पड़ेगा कि वो लोकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। 5,000 रुपए दे करके मैं समझता हूं कि उस अकाउंटेबिलिटी नहीं की जा सकती, जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके उसको टोटल प्रेशर करना चाहिए कि हाँ ये आप ये काम कर रहे हैं, ये आप हमको पे कर रहे हैं और इसके आप अकाउंटेबिलिटी है। और लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि जितने भी एयरटेल इंचार्जेस हैं, अगर उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको मोटिवेशन दिया जाए एनएटी के लिए, एक कोई ऐसे एक लिंक होगी जो कि एनईटी में वो जाएं और एनईटी में वो डेट क्वालिफाई करें, तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर होगा उस एटीएल्स के लिए। धन्यवाद। जो मैंने अनुभव किया अपने एटीएल के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू। धन्यवाद पांडे जी। मिस मोनिका गौरी। Good afternoon, everyone. I'm Monica Gauri, ATL in charge from PM Shri Kendri Vidyalaya, Sunjwan, Jammu. Actually, sir, I'm ATL in charge from last 3 years. So, basically, जो 3 years मेरे ATL में रहे हैं as a ATL in charge. Sir, क्या मैं सुनाई दे रही हूँ आप लोगों को? Am I audible? हाँ जी, सुनाई दे रहा है। Yeah, yes, please. Go ahead. Okay, sir. Last 3 years में जो मैंने फील किया है as a ATL in charge, no doubt it is a very good program because in 2021 I come to know about the ATL because after transfer I got a chance to be in a school which is having ATL. So first time मेरा ATL के स्कूल में मेरा आना हुआ, but I was not prepared for that. मुझे as a ATL in charge दिया गया, but I have come from a school which is non ATL. So first thing जो मुझे as a ATL in charge फील हुआ वो ये हुआ कि मुझे तो कोई नॉलेज ही नहीं है। बट विद इन 2 और 3 years लर्निंग लिंक फाउंडेशन कंपनी ने हमारे स्कूल को टेक ओवर किया। मैंने काफी कुछ सीखा, ट्रेनिंग्स हुई हमारी, तो मुझे काफी कुछ मतलब सीखने को मिला। तो उससे मैंने ये देखा कि जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे टेक कीन इंटरेस्ट टू elaborate their creativity, they make the projects. So बहुत अच्छा लगा मुझे। But the thing is I am having all others work such as academic workload, examination, students, so much workload in the school, and I truly feel that I'm not justified with the ATL in charge. So I need, what I think is there is a dedicated ATL in charge should be given to the स्पेसिफिक स्कूल्स। अगर हमारे स्कूल्स को एक स्पेसिफिक ATL इंचार्ज आप डेडिकेट करते हैं, मे बी इट कैन बी अ ट्रेनर फ्रॉम द आउटसाइड बट अ डेडिकेटेड ATL इंचार्ज, देन आई थिंक इट विल बी पॉसिबल कि हम जो एक एम लेके चल रहे हैं ATL का, या जो हम चाहते हैं कि हमारा पोटेंशियल हो, वो तभी सर कैलिबर हमारा निकल के आ सकता है। वरना मुझे लगता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है हम कर रहे हैं, ATL इज जस्ट नॉट कि हम गए लैब खोली तो ATL वर्क हो रहा है। ATL मीन्स हम गए, हमने बच्चों को कुछ सिखाया और वहां से हमारे पास बच्चों की इनोवेशन हमें सीखने को मिल रही है। तो समटाइम्स मुझे लगता है कि वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती है, वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है। तो जब सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है तो मुझे खुद से फील होता है कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट थिंग। सो माय बेसिक लास्ट पॉइंट इज कि वी नीड अ dedicated ATL in charge in our labs. So that person will be having all the facility. He or she can implement the workload properly, because under high academic pressure we are not able to do justification with our work. So my suggestion is to please provide ATL in charges specific, just like private schools. मैंने देखा कि जैसे हम गवर्नमेंट टीचर्स हैं, हमें एक वर्कलोड दे दिया जाता है, बट प्राइवेट स्कूल्स में क्या है, प्रॉपर डेडिकेटेड टीचर है जो सिर्फ ATLs के ही वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, नो डाउट हम वो भी करते हैं, बट द थिंग इज कि हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। सो सर मेरा तो थैंक यू मोनिका जी, आपका पॉइंट या समझ में आ गया। So since we don't have time for repetition, so I will move to the next panelist, Ms. Renu Singh. Ms. Renu Singh, are you online? Okay, then we move towards the next question. Hello, am I audible? This is Renu Singh. You are audible. Yeah.
Yes, please So carry on. thank you for giving me this opportunity to speak on this very relevant question. We got our ATL lab in EFU School Hebel, Bangalore in 2016. And no doubt it has transformed the school space enormously. It has revolutionized the school space. It's a wonderful program initiated by Government of India, NITI Aayog. Every year, we look back and see the previous year as to what are the gaps and deficiencies so that we could address and make it more productive. We want the ATL to reach every child's mind. So for this, we have identified the challenges and we are trying to address it. And here is an opportunity for me to reflect on those challenges. As already said, we want a dedicated staff who would lead the ATL. Now what's happening is in most of the schools, the PGT teacher, the teacher who is teaching the senior secondary classes, she has been given the responsibility of ATL in charge. Now she has already so much of burden to complete the syllabus by October of every year. She has to follow up with the slow learners, their remedial classes, the lab work, the evaluation, examination. So her mind is already preoccupied. And after this, she squeezes some time to make out time for the ATL lab. So obviously, she has no other choice because we have entrusted her with this responsibility. And she follows up with the children with all the ATL activities like made the community day, the ATL marathon, tinkerpreneurship, the ATL catalyst program. But it is all mechanical. If you are going to appoint someone who is already having tasks related to her primary subject domain and give her this additional space, which is very progressive and which is going to be very productive, and it is going to transform the nation with such a big vision in our mind, I think every school should be given, empowered to appoint a dedicated ATL staff who could lead this space. Secondly, it is not a one man's job to run the ATL. We require a core team of teachers. This ATL space being interdisciplinary, we require a core team of teachers from various subject domain expertise, from language, from physics, from chemistry, from computer science. So when they come along together, they need to be mentored. We all know the ATL space deals with robotics, coding, 3D printer, advanced digital tools. So we want these teachers, and one of my panelists very rightly said, just like CBSE has 50 hours of mandated workshop, we could have CPD for this core team of teachers so that they can effectively contribute to the ATL. Last but not the least, and one more important point which we have experimented is, we have also involved the parents. We have identified parents who have STEM background, and they have been very forthcoming and participating with us and guiding us and handholding children into this ATL space. Last but not the least, ATLs cannot work in isolation. The ATL activities need to integrate with the mainstream academic activities. Like we have the National Credit Framework. So it's an important point I would like to drive, sir. The number of hours that students invest in ATL labs could be converted into credit points, and that would give them some recognition, some motivation, and finally that could translate into academic scores. So this is a small incentive we can give to the children. Even the parents will come forward and encourage their children to participate in the ATL program. So I wish NITI Aayog best of luck, and I'm looking forward to having more ATLs in the country. And thank you very much, sir, for giving me this opportunity. Yes. Thank you, Mr. Renu Singh. All the suggestions have been taken note of, and I would request all the panelists to kindly, in view of the paucity of time, not to repeat the suggestions which are already made by somebody else, howsoever important these might be.
So we would move to the next question. What collaborative frameworks can be established to support student-led innovations pathways and facilitate greater cross-fertilization between ATLs, higher education institutes, and industry? Dr. Pramila S.S. Good evening, sir. I'm Pramila Manoharan. Thanks for this opportunity. I will directly go into what UNICEF has done in 13 states of India. When we found ATL labs lying unutilized in the schools, we were looking for ensuring that the pedagogy, improving learning levels at secondary school. That's when we found the opportunity of ATL. So the first thing what we did was brought in Samagra and NCERT together, and we curricularized what was available at the lab to the textbook. That's when the teacher did not feel that there's an additional work for them. They felt this is enabling teaching of my physics, chemistry, and all my subjects, my maths. That was one of the biggest success we had, curricularizing it, involving SCRTs, and ensuring and telling the teacher this is not something new, it is what is already in the textbook. And we had captured this as a guidebook also for teachers and created a space for teachers at Diksha, wherein they were continuously provided support with our technical partners, and we handheld them and we gave them a forum to come and showcase, ask their questions, and grow together with their other stakeholders. We did one more thing also. What we had done was we had capacitated the SCRTs to become mentors, as well as the diets and the ARPs. So some of the teachers at secondary level, we don't have CRC structures. So what we had done, some of the senior teachers, together with the BEOs and DEOs and Samagra, we worked in such a system that they were given little allowance to go and support the other teachers. And we created the hub and spoke model across these 13 states. One more thing also what we had done was the science and maths concepts does not just start from 9th grade. It starts from 6th also, much lower than that. And our children come with learning gaps. So we created a low-cost maker spaces. Removing like 3D printing, little bit of IoT, and then ensuring diversification of bringing in agricultural, hydroponics, all of the things which are according to the environment of the child. We cannot suddenly tell a child in certain place to envision something which they are not aware of. So we contextualized it, customized the low-cost maker spaces. And in fact, UP is one of such a good example, as well as in KGBVs, especially when we look at the UNESCO report, we have a lot of girls studying STEM. But if we look at our women participation in the labor force, they are highly in agriculture. They are less in service and industry. So to ensure that, we brought in this low-cost maker spaces and collaborated with KGBVs across the states where we are and ensured girls participate. These are some of the little things we have done. And one more additional thing which we did, like the previous speakers were saying, the manpower shortage. We collaborated with the higher educations, the engineering colleges, universities, and the students have 40 days of internship which they have to do. We collaborated with Department of School Education and Higher Education and facilitated this 40 days of the students coming into the school, working together with the teacher, thus vice versa, the students, both of them, the school students, teacher as well as the higher education students were getting the benefit. In fact, I've personally interacted with the higher education students who said, we have not seen some of these missions, even though I'm learning higher things in that. And their communication skills. The students said, now I'm able to understand how to explain these concepts. I would like to go much more into research. So we saw the collaborative aspects of working together with people also
was happening through this school education and higher education collaboration. So all of these things put together, we were able to propel this. And one important thing, sir, the constructive pedagogy allows for life skills, which is, the design thinking, problem solving, all of this to be incorporated into the classroom pedagogy itself. It need not be a standalone thing. That's what we did. We worked together with teachers and ensured how it can be inculcated within the classroom transaction so that everybody gets the benefit instead of keeping ATL as a standalone and away from the textbooks and classroom. Thank you so much for this opportunity. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pramila. I think some of the work that you already done in terms of incorporating all this in the classroom pedagogy would be really useful when we are going for the design of the next project. Now I would request the State Project Director of Spadra Shiksha from Andhra Pradesh, Mr. B. Srinivas Rao. Sir, good afternoon, sir. Thank you, Sanjay sir and Anil sir and respected panelists for allowing me to talk in this webinar. Sir, already we are working with UNICEF and Vigyan Ashram to bring the best to tinker all the labs, sir, which are kept idle for so long in the state. After I took charge, sir, with the help of UNICEF, sir, we have collaborated with higher education institutions, sir, where the APSHI, AP State Council of Higher Education, have come up with a plan to create an internship course, a short internship course for 8 to 10 weeks, sir. So we have put all the engineering students who has given their option to work with the education sector. They have options, sir, either they can work with education or health. So most of the students have opted education, sir. We have assigned one student to one ATL, sir. Before sending them, sir, we have prepared all the students on the basic knowledge of ATL and we have familiarized them on the tools of ATL, sir. We have given some use cases what to do with the ATLs because as Pramila ma'am rightly said, some of the engineering students might not be exposed to these kind of ATL, SEDINOs, sensors, 3D printing at the time of their schooling, sir. So, and also, sir, we have given the sensitivity on do's and don'ts because these young students have to deal with the teenage students, particularly those for the secondary level, sir. Also, sir, see, I have one suggestion, sir, rather than sending one student mapping to one school, we can give a group of 3 to 5 students comprising of one mechanical student, one design student, and one electronic student together so that they can make the ATLs a better use cases, sir. And also, sir, as Maharashtra Secretary sir said, we need some external agency support, sir. For example, Vigyan Ashram is one of our technical partners doing webinars on weekly basis. Every Saturday on no school, no back day, we are taking help of Vigyan Ashram and conducting webinars showcasing it to the all science teachers how to unbox the ATL and what to do after unboxing, what are the projects we can take up and how it should align to our regular STEM education, sir. Also, sir, in the state of Andhra Pradesh, sir, most of the engineering colleges have adopted this ATLs. They're using our ATLs as incubation centers and also, sir, they're allowing their laboratories to high school students to explore more their ideas, their innovative ideas, sir. Sir, some of the universities have conducted boot camps, hackathons with the help of school education department, sir. I proudly say that, sir, our 30 projects in the state mapped with Atal incubation centers, ACIC, Dell, Capgemini, and KLU, sir. Jammu Kashmir and Chhattisgarh teams have visited to witness the good work done in the state of Andhra Pradesh, sir. And I'm happy to share that, sir, 4 of our projects selected for the Seed the Future. And this French multinational company Dassault Systems have sponsored 4 of our students, sir. I personally witnessed one of the projects, sir. It's really a very impressive project. Students have created solar-based paddy dryers, sir. It's in the Panamaluru High School, sir.
And in 2024, sir, Andhra became the second highest in student innovation marathon, sir. Sir, only one thing, sir, to overcome the shortage of this ATL teachers, sir, we are running vocational education. So most of the vocational trades are with IT, ITS, electronics. So these vocational trainers can be assigned as additional resource in the ATL, sir, so that, sir, we can effectively use the vocational trainer. At the same time, we can overcome the shortage of the teachers, and they will be support to the this physics or chemistry teachers, sir. And the last one, sir, we need to encourage the students to go for more field trips, sir. And we need to invite industrialists or local industry people to visit the schools and give them a lecture on the local problems facing by our artisans or our handicraft people, and so vice versa, sir. So we need to send our students to the local manufacturing hubs, and we should invite the industry experts to the schools, so that, sir, we will give the synergy, we will bring that synergy to bring that gap between industry expectation and the student skills, sir. That's it from my side, sir. Thank you, sir. Thank you, Mr. Srinivas. Keep up the good work. Dr. Anjali Prakash. Good afternoon, everyone. I'm Anjali from Learning Links. We have been working with the ATL mission right from 2016 and worked across states, worked with government bodies, NCERT, to ensure smooth implementation and get the right objectives. I think today is one of a very exciting moment where 50,000, I mean, the number is just amazing. And the opportunity it provides today is like never before. So thank you for convening these meetings. We will bring all our expertise and collaborate and partner wherever possible with all departments across the country. Having heard what all the participants have said, deeply value their insights and don't want to repeat in interest of time. But I think one thing that would really pull this whole thing together at a national level would be an open innovation network for collaboration. Because I think the opportunity for government, academia, industry, parents, students, higher education, bodies like ACIT, if we work together, and because the opportunity is 50,000, a smart AI, supported platform, if we can put that in place and have an open, innovative network for collaboration, we would put all hands on deck, all minds together. There's excellent expertise we have. We have seen it in every corner of the country. We can really use this as an opportunity to change India and the world. We already are very proudly sharing what India does on global seminars and education forums. But with this opportunity, I think we can just take it to the next level. The advantage of having such a network working together on a platform, I have at least 10 points. I don't know if time permits. It's not only connecting resources where they're needed most. In the work we've done at Learning Links, we work, say, with 100 schools, 250, but these are pockets of excellence I still feel that we are creating. But with 50,000, you want to ensure that all of them are getting the right support, input, help, and that can be done with such a platform. We would be happy to collaborate and make a consortium of people from across and put all our experience and learnings on the table. We work closely with governments across 22 states already. We work with NCERT, SCERT, and a lot of industry partners. So we are really excited to be part of this movement and look forward to bringing it together with all of you. Thank you so much.
for the Thank you, Dr. opportunity to Prakash. be part of this. Thank you, Dr. Prakash. We would get in touch with you and obtain all the further details on the 10 specific interventions that you intended to recommend. We move on to the next question. What procurement guidelines and monitoring mechanisms can be established to ensure quality assurance, cost efficiency, and transparency in the procurement processes for ATLs while maintaining regulatory compliance? I would request Director NCERT Nazuk Kumar to respond if she is available, and subsequently Mr. Rohit V. Good afternoon, sir. Sir, I've covered most of the points for procurement already. Fine, thank you. Thank you, Nazuk. Mr. Rohit. Sir, good afternoon, everyone. And to answer this question, I will focus on 4 important aspects. So currently the GEM platform, that is Government e-Marketplace, is used for procurement in ATLs, but it has become a significant challenge for our teachers. The platform should be made more user-friendly and intuitive. We should plan for a dedicated ATL section in GEM to streamline procurement and help teachers to easily locate and purchase the authentic equipment. Additionally, regular training sessions should be conducted to equip teachers with the skills to navigate GEM effectively, ensuring seamless procurement while adhering to compliance requirements. Another significant concern is the price disparity between market rates and GEM listings. For example, an item costing 800 rupees externally may be listed at GEM for rupees 2000 or even vice versa. To address this issue, a tentative cost benchmark should be established for each ATL item, ensuring schools procure equipment fairly and promote cost efficiency. And my third concern is the equipment list. It should include detailed technical specifications, quality standards, detailed description, and expected pricing instead of only brand names. So this approach will empower teachers to make informed purchasing decisions and enhance the efficiency and effectiveness of the procurement process. And my last and most significant concern is about vendors. To ensure, actually, I'm as an ATL in charge. I have served for 8 years. So with that experience, I am sharing this point. To ensure transparency and quality in the procurement process, the ministry could establish a panel of pre-approved vendors, approximately 30 to 50, who met strict quality and compliance standards. These vendors should undergo rigorous evaluation based on their proposals, their establishments, product quality, and adherence to guidelines. Even we can focus on Make in India concept here. Once approved, the ministry can share this list with all 50,000 schools, ensuring that they purchase equipment from reliable and verified vendors. To further enhance the accountability, the ministry can regulate these vendors by setting clear quality benchmarks, cost controls, and training requirements. Specifically, vendors could be mandated to provide a specified number of training hours with well-defined learning objectives. And to assess that effectiveness of these training sessions and overall ATL utilization, the ministry could implement an AI-enabled monitoring system. This system may include CCTV cameras and student response systems, which would be provided to school as part of the ATL equipment packages. And these tools would not only track training delivery and student engagement in real time, but also evaluate the performance and utilization of ATLs. By leveraging AI-enabled analytics, the ministry can ensure that the ATL resources are being effectively used and learning outcomes are being achieved, and any gaps in utilization or training quality are promptly addressed. So this integrated approach will enhance the transparency, accountability, and the overall impact of ATL initiatives. By adopting these measures, the procurement process for ATLs can be made more efficient, transparent, and compliant, ultimately fostering innovation and learning in schools. Thank you, sir. Thank you, Mr. Rohit. All very, very practical suggestions. So now we come to the last question of our discussion. What mechanisms can be introduced to ensure consistency in execution while allowing flexibility for region-specific needs? Mr. Swapnil from Shillong. Good afternoon, everyone. Regarding this question, sir, I have a few submissions. The first thing is that we can have a
standard national curriculum sort of thing, or learning outcomes for that matter, when it comes to ATLs, and what basically the students are expected to learn? Because as of now, there is quite a disparity and different states may be doing different things. So if, for example, in the textbooks, we have come up with the learning outcomes, and that has kind of standardized the whole process. And then within that, the state have their own space in the form of SCF. So a similar thing can be done here as well. The other is that to bring consistency, VSKs can be used. We have been actively using VSKs for quite many things to monitor. So we can come up with these KPIs, and VSK can monitor, and that's how in the Rashtriya Vidya Samiksha Kendra we can see the all the impacts and consistency. The third point I want to make is that the flexibility should be given to the state to finalize the components, because for example, it totally depends on the context, what kind of industries are here in a state, what kind of what is the requirement and what is the interest of the students. So in that light, if we can get the flexibility in the form of untied funds to design what kind of materials and machines and equipments are coming, so that will give us the flexibility to do that. From being from a hilly state, we are given a relaxation in terms of the square feet requirement, 1,000 square feet. But just want to make a submission that even in rural remote areas, our secondary schools are having issues with this figure also. So just wanted to flag it. Of course, we have solved it in terms of combining the classrooms and stuff. So that has been done, but this still remains the issue in hilly states, especially in the northeastern sector. One more point, sir, is that the teachers needs to be trained. And one example I want to give from Meghalaya, where we have under Rashtriya Avishkar Abhiyan, we have collaborated with IIT Guwahati, and they have been very supportive. And in fact, every year 2,000 plus science teachers, they go there, they stay there in a residential training program, and that has really changed the way science is being taught in our school. So we are very thankful for that. So one idea is that every state can have these mentor institutions, these institutions of national importance like IITs and NITs, and we can map them to these ATLs, and they can really provide the much needed training for the teachers. The one more point, sir, is this: we have to incentivize students. For example, we have several schemes, sir, under MOE where students are sent abroad. For example, the Sakura Japan collaboration, where students are sent to Japan. So why can't we think of a competition sort of from these ATS, like a hackathon or any other competition, and the winners would be the ones going to the these kind of scholarships, because as of now they are selected by the state, which may be done in a very random way or in any other way. So I think this model will help to grow the popularity of ATLs, in fact. And lastly, sir, I want to share one example from our Meghalaya. We have something called Chief Minister's Youth Centers, CMYCs, which are on a very similar platform, and these are in rural areas. They are basically, they give space for anyone to come, not just students, anyone to come and innovate, and all the equipments are there, and local youth are hired as facilitators, so they are always there. So this point was also mentioned by one of the speakers, that teachers may not be always available. So this fills in the gap, and the lab is always available for students and youth to come. So that is my submission, sir. Thank you, sir. Thank you, Swapnil. I would request Mr. Dorji to offer his suggestions. Yes, thank you for this opportunity. I too represent a hilly state and the Northeast region. So I've identified certain aspects. Firstly, things scale down in our part of the world. So the guidelines which are applicable to bigger cities may not be applicable to us. Like earlier speaker mentioned, that the buildings and structures get smaller, the classrooms get smaller. So one consideration could be made regarding the floor space of the ATLs. And also the equipments, instead of sending them at one go, they could be sent in phases, so that school can plan how to plan out the storage of these things. The second problem I've identified is lack of enough number of experts in emerging technology areas. So these lack of experts, what happens is it gives rise to another two problems, like procurement of the correct materials and also the functioning. So regarding the procurement, I believe certain packages could be sent instead of sending the money, because once the money comes, there are some in-between players that cause some undesired procurement.
And the second aspect, which many teachers have already highlighted, is a dedicated expert to handle the ATLs. Thirdly, sir, the demography and the problems in our part of the world is slightly different from the larger part of the country. Like, for instance, we never worry about air pollution and water pollution, stuff like that. For us, crime rates may be low, but suicidal rates are higher. Our roads are frequently disconnected. Earthquakes are more frequent, and we have a greater biological diversity, which needs to be tapped more. And also the cultural ethos are more sensitive, relatively speaking. The ATL packages, learning modules, they can be generalized. They cannot be generalized. So certain equipment packages can be designed specifically for our regions, like related to landslides, earthquakes, bioresources, glaciers. These can also be introduced along with the existing ones. And also for remote schools, as earlier Mr. Kiran had pointed out, we can adopt the concept of mobile and agile ATLs, where certain resources can be shared by smaller schools. These are the points I wanted to keep, sir. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Dorji. Some of these suggestions that you have made are already on our mind, and we are working on those. Thank you. I appreciate and thank all the panelists for the valuable suggestions they have offered. And I also understand that we couldn't have been able to just do entire justice as much as you would have liked to for the wisdom and knowledge that all of you possess and you would like to have shared. There are actually 11 breakout sessions going on in parallel, and all of them were expected to close by 4 p.m. So as a result, I have, tried to be as concise as possible, and we would definitely apologize for the time constraints while sharing your experience, and we look forward to interacting with you a lot more. And there are thousands of school in charges and principals and others who are witnessing and viewing our discussion. We have requested that since they haven't been able to interact with us, and as we could see in the running comments during the live telecast, a large number of them are actually interested in offering their suggestions. And we have been receiving suggestions over the period of last 1 hour and 15 minutes online. So I would request all the participants, all the viewers who have suggestions to offer, to kindly mail their suggestions at the email ID given here, ataltinkeringlabs.moe@gmail.com. Rest assured that each and every email would be gone through very, very carefully, and it would get the attention it deserves. And all the panelists, I thank them once again. And we would be in touch with you to receive your sessions further and carry the program further. With the support of all of you, I am very confident that under the leadership of the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister, we would be able to make this program a great success. Thank you everybody for participating. Yeah.
This meeting is no longer being recorded.
वीडियो ऑन कर। Hello. Hello, NICERT quarter. I am audible. अरे वो ठीक है, चल रहा है। This meeting is being recorded. Hello. Hello, NIC. हेलो। हाँ, आ रही है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। ओके। हेलो NIC। हेलो NIC। आपकी आवाज मिल रही है आपकी आवाज। नीति आयोग से बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू सर।
Hello, NICERT. I'm audible, sir. आपकी आवाज मिल रही है ना नीति Level, sir. मैं नीति आयोग से बोल रहा हूँ आपकी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी? मंत्री लोग कहाँ गए? आवाज आ रही है सर? वीडियो ठीक है, थैंक यू. Hello, NICERT quarter, audio video clear? Ministry of Labor. Yes, yes. यहाँ से हमारी तस्वीर जो है सर. You are audible and visible. सर पीपीटी का वो क्या बोलते हैं परमिशन दे दीजिएगा सर हमें. जी सर. I can read from here, I think, right? Okay. Good afternoon. Am I audible? I'm speaking from Mahua. Yes, ma'am, you are audible. Thank you.
सर लेकिन सर शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन। सर मैं शेयर कर रहा हूँ डेमो लेकिन हो नहीं रहा है, इंटायर स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। सर मैं चेक करता हूँ। Namaskar. Can we start the proceeding? I request all the participants to switch on their video so that we get to know who all are present. Hello. Sir, I am audible. Namaskar, good evening. We are now starting the session, which is the last session of this webinar on the theme Investing in People. So I welcome all the dignitaries to this closing session of post-budget webinar. The opening session featured a panel of discussion on theme number 4, Investing in People, with participation from key sector experts and secretaries of various ministries and departments, the government. Subsequently, based on the guidance which we received from Honorable Prime Minister in his address, there was a breakaway session on 11 topics and which covered 12 budget announcements. On the basis of this deliberations in the breakaway sessions, this is the closing session in which summing up of each of the sessions will be done. So to start with, I'll request Dr. Bineet Joshi, Secretary Department of Higher Education, to sum up the breakaway session on Bharatiya Bhasha Pustak Scheme, expansion of capacity in IITs, and Center of Excellence in AI for Education. So 3 breakaway session, which was of Department of Higher Education, Ministry of Education. Over to you, sir. Thank you very much, Sunil. As we are aware, the Ministry of Education, in collaboration with various other ministries, organized this post-budget webinar to discuss the announcements made in the Union Budget 2025-26 under the theme of Invest in People. The webinar started on this theme's discussion
which was held today. The opening session featured participation from officials representing 8 different departments and ministries, 8 distinguished speakers in the first session, including 4 secretaries and 4 thematic experts, shared various works done by their departments in the last 10 years and gave information about budget announcements of this year 2025-26. On behalf of the Higher Education Department, Professor Jagdish Kumar, Chairman UGC, highlighted the developments that have taken place in the higher education sector in the last 10 years, and he briefed about the importance of 3 budget announcements, namely expansion of capacity in IITs, COE in AI for education, Bharati Bhasha Pustak Mission, which were included in theme 4, that is investing in people. The opening thematic discussion session of webinar saw a remarkable turnout with more than 32,000 participants joining through various platforms. Honorable Prime Minister addressed the webinar and provided guidance for discussion related to the higher education sectors and other sectors which were discussed today. Post the address from the Honorable Prime Minister, 11 breakout sessions were held covering 12 budget announcements. The first breakaway session as far as Department of Higher Education is concerned was on Bharati Bhasha Pustak Scheme. The expected outcome of the session was to promote inclusivity and successful implementation of the program, to produce 15,000 books in 22 languages over the next 3 years, which shall require engaging thousands of teachers, authors, translators, and experts. In this, there was, as far as the experts are concerned, there was regional coverage with 7 experts from North, 4 from South and Southwest, and 2 experts from the West. Representation from East, Northeast, and Central regions was also there. The experts also represented various sectors of education as well as government and industry and startup representatives. In terms of domain expertise for Bharati Bhasha Pustak Scheme, there were areas covered like education policy, public policy, engineering, literature, political science, history, and even nanotechnology, which reflected a rich mix of technical and cultural knowledge. States represented were 11, including Karnataka, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Delhi. The key recommendation of this breakout session was for productive engagement of thousands of experts and authors and translators, and this was said that it has to benefit to about 30 crore students, and this will also boost LLMs and accuracy levels of AI translation tools. The breakout session also identified key challenges and risks, which was basically in the area of ensuring uniform academic rigor, accuracy, and standardization, filling in gaps for adequate number of subject experts in different languages across the institutions, ensuring that the AI-generated content maintains linguistic accuracy, contextual relevance, and cultural sensitivity. It was also identified as a challenge which needs to be addressed as to how this scheme will ensure accessibility of digital resources in regions which have limited digital infrastructure, while ensuring widespread adoption of these resources by teachers and students. And one of the challenges that was identified was that how to ensure that the timelines and milestones are met and planned, and if there is any delay, how to ensure that there is no quality compromise. The second breakout session, which was there under the Department of Higher Education, was on COE in AI for education. The discussion included developing a detailed roadmap for operationalizing the announcements, including timelines and key milestones, and establishing clear guidelines on regulatory frameworks and compliance requirements. Comprehensive strategies for integrating AI and skilling programs into mainstream education were highlighted, along with the best practices for curriculum development and teacher training in AI. As far as the experts who participated in this, they also represented various regions, and there was good sectoral representation from academia, 11 experts, industry leaders, 3 experts, and government officials, 3. In terms of domain expertise, 6 experts were from AI and computer science. Engineering, there were 5 of them, education and management 4, and energy and sustainability 3. State-wise spread was also noticed in the experts. They came from 8 states. As far as the recommendations are concerned,
the group has recommended that immediate steps are required to integrate AI into education effectively to ensure the model should ensure equity, access, inclusivity, and this should be at the core of AI adoption. Universities must embrace AI-based curricula and foster collaboration among stakeholders. Students must be actively engaged with, and they should be encouraged to use AI-driven learning methodologies. This is not just about the budgetary allocation. We must move from vision to implementation with a strong focus on preparing India's workforce for future. As India stands at a crossroads, we have the opportunity to lead in AI-driven education, and it was said that AI will be a crucial driver of India's growth towards Viksit Bharat, and we must seize this moment to shape the future of learning. The third breakout session under the Department of Higher Education was on expansion of capacity of IITs. The expected outcome of this session was to establish a clear implementation roadmap for the expansion of IITs, ensuring alignment with the Union Budget 2025-26 and NEP 2020 goals. As far as the experts are concerned, they represented 10 states and UTs. There was a good sectoral mix from academia. 8 experts were from academia, 2 from industry, and 2 from government, or they were the ones who were playing policy roles. In terms of domain expertise, 7 were belonging to engineering and technology, 2 were from science, and 1 was in security, data security and privacy, 1 was in disaster management, and 1 in skill development. And as far as the composition is concerned, the panel brought together voices from research, industry leadership, public service, and fostering a holistic view of the national development. The discussion emphasized the importance of engaging with stakeholders, including educators, industry experts, and community leaders, to build consensus and promote a collaborative approach. Potential challenges related to infrastructure, funding, faculty recruitment, and inclusivity were identified, and strategic solutions were proposed to overcome these obstacles. The need to strengthen research capabilities and foster innovation in emerging fields such as AI, quantum computing, and machine learning were highlighted. Additionally, the importance of promoting inclusivity and equity to address regional imbalances and provide increased access to quality education for underrepresented communities were underscored. A robust monitoring and evaluation framework was also discussed to track the progress of expansion projects, ensuring transparency and accountability. Short-term specialized degree programs to address the emerging skill demands was one of the major recommendations. Thank you. Thank you, sir. Now I request Sri Anil Malik, Secretary, Ministry of Women and Child Development, to sum up the breakaway session on Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Over to you, sir. Secretary, Ministry of Women and Child Development. So, shall we go to the next one? Can I request Dr. Neeraj Mittal, Secretary, Department of Telecommunication, to sum up the breakaway session on broadband connectivity to government secondary schools and PHC? Now we have the WCD. So, yeah, I think additional secretary is there to sum up this. Yeah. Yeah. Over to you, Ganesh. Oh, okay. Sir, I think Secretary, Ministry of WCD is present, so I'll request sir to start this. चेक करो वहाँ पे NIC क्या पूछ रहे हैं Sir, we can't hear you. Okay, but yes, sir. Sir.
Is it audible now? Yes, sir. Now you are audible, sir. Thank you. Good afternoon. Sorry for the inconvenience. So this was the budget announcement the Honorable Finance Minister made. This was regarding cost norms. May I continue? May I continue? Sir, please continue, sir. Okay, because I can hear a lot of background noises. So the Honorable Finance Minister made this announcement in the budget, cost norms for nutritional support. This was for, Anganwadi system. Next. So this is just a brief of the whole Anganwadi system in the country. It's almost 14 lakh Anganwadis across all the states. And this is what we do. I think it's well known. The major 6 jobs, SNP and preschool non-formal education, immunization, health checkup, referral services. And we serve children, adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers. Next. The numbers I gave in the morning, and they discussed in the afternoon also. This is one of the biggest beneficiary-oriented programs, 100 million total beneficiaries. Next. So there is this comparison also, before 2014 and after 2014. So a lot of strengthening of the Saksham Anganwadi, which was discussed in the webinar today. So some of the points are highlighted here. That smartphones, growth monitoring devices, they were not there earlier. And then the concept of Jan Andolan, Poshan Pakhwada, Poshan Mah, community-based events, they were not there earlier. There were a lot of so-called mini Anganwadis, which were pretty much dysfunctional. They have been converted into main Anganwadi. Then the concept of, drinking water and toilets in all the Anganwadis, it has been emphasized only since 2017. Then we are saturating the tribal areas, with Anganwadi system. Next. Fortification of, the floor and the ingredients and use of millets. Concept of Poshan Vatika, where Nutri Garden, will be established. More than 6.5 lakh, almost 6.5 lakh have been established. So all these things were discussed about the strengthened Saksham Anganwadi in the afternoon session. Then regional diet charts and these 2 protocols we discussed in the morning also of management of malnourished children and management of Divyang children. Next. And the Anganwadi workers and helpers, they have been covered under Ayushman scheme now. And we are now emphasizing on the ECC part quite a lot, which was not there earlier. Next. The gender budget has correspondingly increased in last 10 years as a proportion of the total union budget also, from about 5.48 to 8.86 crores, 86%. Next. Go back. These indicators were also discussed that the rate of decrease in malnourishment is a little on the lower side. Though our tracker data is showing that that has picked up, and now the level of malnourishment is not that high as is being projected through the NFHS. Next. This is just one of the designs of a Saksham Anganwadi. We have approved 2 lakh right now. About 17,000 have already been established. And in the next FC cycle, we are going to approve more. Next. There was a discussion on the IT system Poshan Tracker also, how it has changed the dynamics and the data, integrity as well as the data availability. It has also strengthened the beneficiary, vis-a-vis the Anganwadi worker, and also helped the Anganwadi worker, reducing drudgery in her job. We are going to use it for further improvement in the delivery of services through facial recognition system and also popularization of the beneficiary module, so that the beneficiaries have more power vis-a-vis the worker. Next.
The idea of convergence with the ministries was also discussed. We have, we converge our job, the items that we take up for implementation in the Anganwadi sector. They converge with the activities of these 17, 18 other departments and the NITI Aayog. So on and off, we keep on dialoguing with them, holding meetings with them and VCs with them. At the state level, at the district level also, there are committees to take care of the convergence. But this is an area which needs continuous monitoring and continuous hand-holding. It's not easy to achieve. Next. This is about pre-2014 and post-2014 situation in the idea of women-led development, though this was not strictly discussed in the afternoon session because that was focused on the Saksham Anganwadi. But this highlights the commitment of the Union government to forge women-led development by these initiatives like Nirbhaya Fund initiatives, focus on gender budget, the schemes like Emergency Response System 112, One Stop Center, Women Helpline, next fast track courts, then concept of anti-human trafficking units, women help desks in the police station, then strengthening of forensic science labs, and various other initiatives about crimes against women, how to investigate and speed up the investigation. Next. Then the concepts like Safe City Project and the scheme Beti Bachao, Beti Padhao, the database on sexual offenders, all these things, paid maternity leave, which was increased to 26 weeks. So these are and mandatory requirement of crashes in establishments having more than 50 employees. These are various measures that have been taken up, to promote women-led development. Next. These are initiatives taken by other ministries, permission to women in combat roles in armed forces, girls in Sainik schools, girls in NDA, and then women allowed to work at night and under certain conditions, reservations in CAPF, and all these other initiatives that are indicated here. Next. Next. So the key takeaways were that all the stakeholders and organizations, they have to come together, converge, and because the Saksham Anganwadi program is not merely of the WCD ministry. It deals with the development of human resources of a very sensitive group, where the brain development happens the maximum in that time. So the convergence and all other efforts, use of technology, and now the diversified diet for which the special budget allocation has been made, behavioral change at the society and at the individual level, then the idea of AAA, Asha, Anganwadi worker, and ANM, they have to be effectively working together, and then the concept of scalability by involving private sector, international organizations in different initiatives. All these things were discussed. Next. Okay, I think that's about all about the summation of the discussion. Thank you. Thank you, sir. Now I request Dr. Neeraj Mittal, Secretary, Department of Telecom, to sum up the breakaway session on broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Over to you, sir. Thank you, Honorable Minister for Higher Education, all colleagues who are here. This was a very insightful and enriching discussion today with experts, policymakers, and stakeholders who came together to chart a path for using the rural broadband connectivity for secondary schools and PHCs under the BharatNet program, which has been announced by the Honorable Finance Minister. Special acknowledgement to sister departments of Ministry of Education and Ministry of Health and Family Welfare, all the agencies who would be working in this collaborative effort. And this seminar is one of the starting points to actually engage with all of you to be able to chart a plan so that the end users who are in PHCs and in schools really benefit from this wonderful initiative. In terms of the interaction which happened, there were a lot of suggestions, and of course,
people foresaw that there will be a lot of benefits to the stakeholders. In terms of benefits for the education, the schools and the children who are studying there in the higher secondary schools, we foresee that the smart classrooms, e-learning platforms, access to quality teaching materials would lead to bridging of the urban quality can be brought to the rural areas of education. Teachers would also benefit from access to online training programs, AI-driven teaching tools, other digital literacy initiatives, enabling them to deliver better learning outcomes. We would also be able to possibly integrate Samagra Shiksha, Ullas, and other initiatives to ensure that every child, regardless of geography, has access to real high-quality education. In terms of suggestions, which might be some kind of challenges which you need to deal with, would be to actually enhance the digital literacy, provide good quality content, maybe see how the next technologies such as 5G and 6G can bring AR, VR, high bandwidth technology to the schools to improve their uptake of knowledge. How do you provide support in a 24/7 initiative to all the large number of schools and students? Access to digital devices, both at home and as well as in schools, and possibly some kind of a language divide which might hamper the absorption and access to these programs. On the healthcare side, it was discussed that the telemedicine will bridge the healthcare gap for rural populations, allowing remote consultations, digital prescriptions, and better disease management. Electronic health records under the ABDM would ensure that patients have seamless access to their medical history and provide them a better level of healthcare in their homes in rural areas. Platforms such as eSanjeevani, Telemanas would also enable real-time medical assistance diagnosis and bring tier 3 best quality medical care to the doorsteps of rural patients. This, of course, there are some challenges which we have foreseen. Again, some of them are relating to digital literacy of handling, this kind of platforms in rural areas. Another challenge was, since these may be dependent on high bandwidth requirements, the consistency and quality of the BharatNet would be something which we have to be ensured. Capacity building of the PHC staff would be another challenge, and the use of concomitant digital infrastructure such as the ABDM would really bring benefits to everybody. This is not about just building digital highways, it is about building a stronger and inclusive India. And therefore, the bridging of digital divide, empowering of rural workforce, strengthening governance and service delivery in these areas is something that this project will deliver. We need to collaborate with our government stakeholders, educational and healthcare institutions, and community involvement. And we look forward with all the suggestions which have been received today to take it and make the Prime Minister's vision a success. Thank you so much. Thank you, sir. Now I request Sri Atul Kumar Tiwari ji, Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, to sum up the breakaway session on National Centers of Excellence for Skilling. Over to you, sir. Namaskar, Honorable Minister for Education, Honorable Minister for State, Independent Child Skill Development and Entrepreneurship, my colleagues, secretaries, and all those people who have joined on this webinar. Sir, first of all, I'd like to highlight what the Honorable Prime Minister said initially in his address, which was that the investing in people provides the roadmap for a Viksit Bharat, our vision of Viksit Bharat. And he also laid down there three pillars critical, which is education, skilling, and healthcare. Then he also mentioned that how many people have been trained and the upgradation of ITIs have been taken. And he emphasized that it is necessary for us to train our youth in industry-relevant fields, bridge the gap between industry and academia, and industry and academia have to play a crucial role in skill upgradation. Sir, we had a distinguished group of panelists from the state government, from the industry, from the academia, and also from the international experts. And we also had a question-answer session.
And the points, the various suggestions were made by the industries in how the Center of Excellence are critical for transforming the skilling ecosystem. Kya ho gaya? Yeah. So, and global partners also gave their suggestion, as well as states and academia. So, and this webinar was also viewed by webcasts and VC links, NCVT awarding bodies, assessment agencies, around 8,000 ITIs, NSTI, NIMIs, and apprenticeship JSS, and all put together, sir, we had almost total 12,642 people were there watching this session, sir. Sir, we have a small presentation in which I will just very briefly show you the key takeaways from the breakout session. Presentation, please. Aya? Yes. So this is the theme number 4 on investing in people, sir, in which the next slide, please. These are the National Center for Global Expertise, which was made in the budget announcement, sir. And this is what we say that this will be the where we like to go ahead, like the proposed features. How do you leverage global partnerships, research ecosystem, existing courses, and skill qualification framework, higher level. Next, please. And these were the panelists, sir, that from the state government of Odisha, Karnataka, and Gujarat, industry from Tata, sir, Reliance, and the J&K Siemens. From academia, we had the Institute of Competitiveness, and international, we had from the World Bank, sir, and 2 from Singapore. Next, please. So these are the detailed pointers from the industry. They say that the Center of Excellence are very critical for transforming the skilling ecosystem, and industry participation in training can happen through a revolving door mechanism so that the people work in the industry as well as they also come for the skilling institutions. And they also wanted that there should be industry investment in skill development over and above the CSR funds which is required. They also emphasized that we need to have a special cadre for the master trainers, and whatever COE which we have, they should integrate digital infrastructures and advanced technology. Next, please. The global partners, in sum, they said, sir, that the collaboration with global institutions will enhance the course design. They also said the industry-aligned finishing schools may also be necessary to bridge the quality gap in vocational education. They also said that there should be intensive training of trainers much before they go for the local teaching. And they said that there has to be some mechanism whereby in lines of the what is happening in education, sir, continuous tracking of student progress, placements, and industry feedback. Next, please. The state level say that we need to revamp our ITIs with modern technologies like industrial robotics and EVs, and they wanted the COEs should function as knowledge partners for ITIs following a hub and spoke model. And they also emphasized that the public-private partnerships are essential for scaling the skill development, and there has to be certain autonomy given to Center of Excellence to introduce new courses aligned with industry needs, and the NSTIs should evolve also into finishing school for ITI graduates. Next. The academia's role in skilling was emphasized that the only very small population of India undergoes effective skill training, and they also say that if we give them training, that increases their per capita income, and there should be sectoral focus on undertrained industries like agriculture, ITS, and manufacturing. And they also wanted that the foundational learning should be strengthened before taking the large-scale vocational training. That's it. So the key takeaways are, sir, that which is a mixture of all that, sir, that it should be industry-led governance. There should be a partnership with global institutions. The curriculum needs to be continuously upgraded.
We should have a relationship with think tanks and partnerships. And the COEs could serve as a research and innovation hubs for the industry in terms of short-term training as well as and the curriculum design will be very important aspect of which I have said. And they also wanted that the trainer should be taken from the industry on rotation basis, and there has to be some amount of standardization along with the autonomy and flexibility in introducing new courses. They also, a very important point which was mentioned was, sir, that if you are going for manufacturing, generally the wages in the manufacturing are not good. So in order to attract, we need to think some possible ways in which we can have minimum wage support for manufacturing. So this sector becomes more attractive over and above the existing sector where all the youth want to go, sir. And of course, the focus has to be in digital infrastructure for faculty exchange, high NSQL level courses, and focus on foundational skills. And the focus area should be identified, and they also mentioned which are the areas on which these center of excellences can focus on. And they very much emphasize that there has to be new age courses like data analytics and green skills, and there has to be continuous upgradation of curriculum to maintain industry academia partnership. That's all I have to say, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request Ms. Punya Salila Srivastav, Madam, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, to sum up the breakaway session on expansion of medical education and daycare cancer centers in all district hospitals. Over to you, Madam. Yes, Sunil. I just have a small presentation which I'll share. So as Sunil mentioned, am I audible? Sunil, I'm audible, no? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So, sir and dear colleagues, in our, as Sunil mentioned, our post-budget webinar focused on two budget announcements. One is relating to medical education and the other to cancer care. Our introductory session was spearheaded by Dr. V.K. Paul, who is member health of NITI Aayog. And in this session, he basically explained how in the progress over the last decade, we have laid a strong foundation for this year's budget announcements, both in the sphere of medical education as well as in the sphere of cancer care. So as Sunil mentioned, the first budget announcements relates to setting up of 10,000 additional seats this year in medical colleges as well as hospitals. And this is to achieve the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years, which the Honorable Prime Minister had said in his speech on 15th August 2024. The challenges that were identified during the webinar primarily related to the shortage of qualified faculty and specialists, to affordability and accessibility of medical education, availability of adequate clinical resources as well as infrastructure, and it also spoke that there are limited opportunities for specialization, which leads us to a vicious cycle of not having adequate faculty. Next. Then we have tried to categorize the recommendations that came during the webinar into these broad categories. So as far as the faculty development and shortages were concerned, our experts who ranged from private colleges to government colleges to the regulators and very esteemed faculty were there in the whole session, which was managed by Director Ames. In that, the experts basically stated that we need to assess our faculty gap and ensure that the recruitment that we do aligns with the increase in medical seats which we are planning. So they thought of ways to expand the pool of faculty. They came up with a suggestion that maybe we can share faculties between medical colleges, especially with regard to non-clinical subjects. They also spoke of leveraging technology for teaching. Honorable PM also today in his address
spoke of using technology for education. So this was a suggestion which came forward from our experts also. There was talk of strengthening of the faculty development programs so that our faculty can keep in tune with the emerging emerging medical education, and this would bring in better remuneration and career progression for them also. So there was talk about flexibility in entry as well as in faculty norms. And in order to encourage research, they said that there should be adequate time available for research also to our faculty. And they spoke of having perhaps separate recruitment boards in states for faculty. Regarding curriculum, there was stress on competency-based medical education and bringing in early clinical exposure for our students. They also emphasized that the communication skills of our students and faculty has to increase. So bringing in soft skills into the modules, research skills, and we should not just emphasize the curative aspects, but also the preventive and promotive aspects relating to health. A lot was spoken on integrating AI, telemedicine, digital health into the syllabus, and there was talk of centralized digital libraries, tele-learning platforms, and simulation labs. A very important point which emerged from the entire discussion was that we need to optimize our existing resources, because that is the only way we can tackle the issue of resource crunch, both in clinical as well as infrastructure resources. It was said that we have district hospitals, we have smaller hospitals, we have hospitals belonging to public sector units, central government hospitals, we have the private hospitals. So how can all of these be utilized for medical education was discussed, and bringing in public-private partnerships to enhance medical education was also touched upon. Then regarding PG seats, it was strongly felt that we need to increase PG seats, and this could be done by leveraging some of these hospitals for bringing in standalone PG institutions. These hospitals could be of health ministry, they could be of the other ministries, they could be of ESIC and our various other PSUs. These could be private institutions. Another feedback which came from the state secretary was that we should implement the district residency program. Not only does it address, brings in clinical exposure to our students, but it will also help us bring in additional 25% seats. This came as a very good suggestion. Regarding affordability, there was talk that the regulation of fee structure should be done in a very fair and transparent manner, and we have to see how can we bring in more low-interest student loans as well as expand scholarship where required with the help of CSR. Based on these recommendations, a very tentative implementation plan has been drawn up. How states, during which timelines should states map the existing seats in their medical colleges? What is the possibility of expansion? Where can we start DMD courses, especially in private hospitals? Where other ministries can identify their potential hospitals where we can start PG institutes? A stakeholder consultation to meet the faculty requirements as well as faculty development. How to strengthen competency-based medical education. We decided to set up a core committee which would look into integration of AI, digital technology, and research in medical education. So these were some of the points and we tried to draw up an implementation plan for ourselves. The next budget announcement deals with setting up of daycare centers in all district hospitals in the next 3 years and 200 centers this year itself. For this webinar also, we had experts from every tier of cancer care, as well as those who are working with patient support groups. We also had people from the NABH, from other foundations who are working in cancer care. The challenges which were identified during the webinar, of course, relate to manpower shortages because this is a very specialized field. There was emphasis on the training needs.
the equipment and infrastructure, if it has to be brought in district hospitals, how to go about it, how to manage the drugs, because there would be requirement of specialized drugs for every type of cancer, and the talk of referral systems, because as Dr. Paul had also mentioned in the morning, at primary healthcare level, we are doing screening for 3 types of cancer. How to link it to our district hospitals, then to the state cancer institutes and other tertiary care institutes. So the recommendations was that we need to ASAP do a gap analysis of all our district hospitals. The training programs have to be very comprehensive. Luckily, in our expert group, we had people who have developed such daycare centers. So they had a lot of suggestions to offer to us how standardized training modules can be developed, how do we train the existing staff and local doctors, and also ensure the availability of these trained doctors in the district hospitals. Honorable PM spoke in the morning about daycare centers and digital health infrastructure, linking the two. So this will of course prove very powerful, because we are dealing with the poor population, which may also be migrant population, so we need to track them. So as another colleague spoke, it is very important to implement the Ayushman Bharat digital mission fully, and having broadband connectivity to our PHCs will help, because that is where the ABDM registration starts in most cases. There was also the talk of the importance of patient support groups in hand-holding the patients, because most of these daycare centers are going to look at chemotherapy. So that requires a lot of support from people. There was talk about, there were suggestions relating to equipment, infrastructure, how you do the drug management. It was emphasized that you need online platforms to do it. So we have a DVDMS platform which we will have to leverage for the purpose. How to maintain the equipment that we bring was also discussed, and how to handle the logistics of the drug supply. So that's why this recommendation for strengthening regional drug warehouses. The referral linkages, as I mentioned earlier, become very important, because this is going to be a hub and spoke model. So the district hospitals with tertiary centers on one hand, and the Ayushman Arogya Mandirs on the other hand. The entire cancer care works on SOPs. So we need to have clear protocols for the referral systems, as well as use of the digital health infrastructure to implement these protocols, and training in these protocols for all the people involved right from the beginning. There was talk of affordability and accessibility. A number of suggestions came that the cancer patient transport becomes very important. And for this, we also thought we could leverage public-private partnership. Community engagement becomes very important in cancer care. Here also we tried to develop a broad implementation plan. Gap analysis of the facilities at our district hospitals, including the existing daycare centers, is very important. We have to work out a strategy for infrastructure development in a time-bound manner. The HRD part, which we spoke, we need to train staff in these specialized protocols. So this was our broad strategy, and I wish all of you good health. Thank you. Thank you, madam. Now, to sum up the breakaway session on strengthening urban livelihood and PM Swanidhi, I request Ms. Sophia Dahia, Chief Controller of Accounts, Ministry of Housing and Urban Affairs. I'll request, in interest of time, to be a bit brief in summing up the breakaway session. Over to you, madam. Thank you. Namaskar to honorable ministers, respective secretaries to Government of India and colleagues. I am representing Ministry of Housing and Urban Affairs. As we speak, an international conference is going on in Jaipur on circular economy, and Secretary Mahua and Honorable Minister are participating in that as we speak, and that is an international conference. So I've been asked to sum up the 2 breakaway sessions for the ministry. In line with the words of Honorable Prime Minister,
that investing in people is as crucial as investing in infrastructure and the economy. Our discussion emphasized the importance of human capacity building, particularly as Indian cities will house 900 million people by 2047, as also mentioned by Honorable PM in his address earlier today. We had the privilege of engaging with esteemed speakers and experts who shared their valuable perspectives on strengthening urban livelihoods, digital and financial inclusion, and innovative support for vulnerable occupational groups. A key takeaway was the role of women-centric banking agent networks in expanding financial access. Promoting small savings among women fosters financial stability, and deploying women banking agents can bridge accessibility gaps. Investments in financial inclusion, particularly in urban slums, were highlighted as crucial. The panelists stressed the need for gender-sensitive training for all financial agents. Interesting recommendations and visions were therefore shared by several speakers for the women in the urban ecosystem. One such vision was that by 2030, at least 30 lakh women shall have a monthly income of 30,000. Speakers emphasized integrating digital and financial tools such as UPI-linked credit for gig workers and street vendors, automated saving mechanisms, and multilingual helplines to enhance financial security. Programs like PM Swanidhi were recognized as vital in providing access to credit and formalizing businesses. It was mentioned that credit card-based schemes may prove to be more beneficial to street vendors as compared to short-term loans. Further, integrating urban micro businesses with digital markets such as weekly hearts and street food hubs were also recognized as opportunity to connect vendors with e-commerce and expand their economic potential. Beyond financial inclusion, strengthening urban livelihoods through targeted interventions was a focal point. Organizing vulnerable occupational groups into common interest groups or the CIGs enhances credit access and skilling opportunities. Worker-centric social infrastructure such as labor chalks, EV charging hubs, and rest zones were recommended. Private sector engagement and public-private partnership were highlighted as key enablers in financial and social security expansion. Policy convergence amongst ministries and streamlined welfare access were underscored as essential for implementation. A single window system at urban local bodies can effectively link informal workers with pension, insurance, and financial programs. Examples like sanitation worker initiatives in Odisha and Tamil Nadu showcase successful policy integration to uplift informal workers. In conclusion, today's discussions have provided a roadmap for advancing financial inclusion, strengthening urban livelihoods, and ensuring economic resilience for vulnerable communities. The insights shared will guide future interventions to empower women entrepreneurs, gig workers, and other informal sector employees. Moving forward, collaboration and strategic implementation will be key to fostering inclusive growth and financial empowerment for all, so that, as mentioned by a panelist, the urban workforce is not just resilient, but also prosperous. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Ms. Sumita Davra, Secretary, Ministry of Labour and Employment, to sum up the breakaway session on Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers. Over to you, ma'am. Ma'am, you are not audible. No. You are not audible, ma'am. It's the minister.
Ma'am, you seem to be muted. Can we just, yeah. Am I audible now? Yes, ma'am, you are audible now. सबको नमस्कार सर, आज हमारी चर्चा ब्रेकआउट सेशन में बजट अनाउंसमेंट पर हुई। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म वर्कर्स में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं उनको हम ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैसे कवरेज दें, हेल्थ कवरेज। सर, हमारी चर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स 11 एक्सपर्ट्स जुड़े और हमारी पार्टिसिपेंट्स जो कि थे उसके अंदर तो अच्छे नंबर में हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े। तो इसमें जो चर्चा हुई है मैं थोड़ी सी स्लाइड्स में दिखाना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय कम है, बट एट अ ग्लांस मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी हमारी पैनल डिस्कशन की क्या हाइलाइट्स थी। सबसे पहले तो सोशल सिक्योरिटी टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स की जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है। तो हमने इसमें देखा कि लगभग 2% के करीब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वर्कर्स अब आ रहे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ रही है और ये एक इमर्जिंग एरिया है एम्प्लॉयमेंट का। और डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्कर्स की देश की इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है और उनको सफिशिएंट आर्थिक और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम की जरूरत है। इसके कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी नेट की बहुत जरूरत है इन वर्कर्स के लिए और इन वर्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी है कि हम सही लोगों को लाभ दें। तो आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए जो एग्रीगेटर मॉड्यूल हमने ई श्रम पर लॉन्च करा है उसका उपयोग हम करेंगे ताकि ये सभी वर्कर्स जो कि एलिजिबल हैं उस पर आ जाएं। और जिस तरह आप जानते हैं हम एग्रीगेटर का मॉड्यूल मंत्रालय लॉन्च कर चुका है और सभी वर्कर्स को जो इस पर जुड़ेंगे उसका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिलेगा जिसे हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं और वो उनके आधार के साथ भी सीटेड रहेगा। आगे चर्चा हुई सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ये पीएमजेवाई का बेनिफिट मिलना चाहिए। इस पर सभी ने इस बात पर एग्री किया कि एक वेल डिफाइंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये स्कीम वेल टारगेटेड रहे क्योंकि ये जो वर्कर्स है इनका बड़ा फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वर्क है और ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप से हटकर है। तो इसमें जो क्राइटेरिया पर बात हुई है सर वो है कि ये लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने महीने, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म पर जो वर्कर्स हैं वो साल में हमने देखा है 2 या 3 दिन भी काम कर लेते हैं, पर कई लोग हैं जो कि इससे जुड़े रहते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं प्लेटफॉर्म वर्क में। तो इस तरह की चर्चा हुई सर और इनको कितना पेमेंट मिल रहा है एग्रीगेटर से। इसके बाद अवेयरनेस आउटरीच की बहुत जरूरत है जिसमें मंत्रालय प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स के साथ जुड़कर ये स्कीम का आउटरीच करेगा सर और इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर एप्लीकेशंस है एग्रीगेटर्स की उसका हम उपयोग करेंगे और मंत्रालय भी मिशन मोड में आईसी कैंपेन चलाएगा। इसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमने देखा ई श्रम हमारा एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही वेल एप्रिशिएटेड टेक्निकल प्लेटफॉर्म है सर जो कि हम ग्लोबल लेवल पर भी पोर्ट्रे करते हैं। इसके एग्रीगेटर मॉड्यूल से सीमलेस रजिस्ट्रेशन होगी और आइडेंटिफिकेशन जैसे कि मैंने अभी बताया और ये आधार लिंक रहेगा, सभी को उनकी यूनिक आईडी नंबर्स मिलेंगे। स्कीम का क्या इम्पैक्ट होगा, एक तो प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट और भी होगा और जो यूथ है और जो अंडर एम्प्लॉयड फीमेल अनएम्प्लॉयड वर्कर्स प्लेटफॉर्म इकोनॉमी में काम कर रहे हैं इनको इंसेंटिव मिलेगा और इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि हेल्थ केयर कवरेज एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है सर प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। जेंडर एस्पेक्ट क्या है इसमें, जैसे कि हमने देखा विमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन को इंकरेजमेंट मिलेगा, उनको स्टेबिलिटी मिलेगी और एक फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वर्क जो कि विमेन करना चाहेंगी उसमें उनको एक हेल्थ कवरेज का एस्पेक्ट भी जुड़ जाएगा सर उनको और उनकी फैमिली से। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, सर सभी पैनलिस्ट ने कहा कि सरकार ने बहुत बड़ी पहल करी है इसमें जो बजट अनाउंसमेंट हुई है हेल्थ केयर कवरेज की और इसके साथ साथ जो इंश्योरेंस और पेंशन है उस पर भी विचार होना चाहिए जिसके लिए सस्टेनेबल फाइनेंसिंग के लिए एग्रीगेटर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स की भी कंट्रीब्यूशन को देखा जा सकता है। तो सर इस तरह हमारी चर्चा हुई आज और हम समझते हैं कि ये बहुत ही यूजफुल थी और हमें ये स्कीम रोल आउट करने के लिए और आगे नेक्स्ट स्टेप्स के लिए बहुत और भी क्लैरिटी मिली। थैंक यू मैम। नाउ आई विल रिक्वेस्ट Sri Sanjay Kumar, Secretary Department of School Education and Literacy, to sum up the breakaway session on Atal Tinkering Lab.
Over to you, sir. थैंक यू सुनील। माननीय मंत्री शिक्षा, माननीय मंत्रीगण जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सभी सहकर्मीगण, सर हमारा बजट अनाउंसमेंट ये रहा है इस बार कि देश के जो सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें अगले 5 वर्षों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को स्थापित किया जाए। अब तक हम कुल 10,000 अटल टिंकरिंग लैब को हमने 2016 में इसे प्रारंभ किया था और उसे हम स्थापित कर चुके हैं। तो उससे हम लोगों की क्या कुछ सीख रही है और उसको किस प्रकार से आने वाले दिनों में हम स्केल कर सकेंगे। तो हमारा विजन है कि हम आने वाले 5 वर्षों में हम कम से कम 10 लाख ऐसे चिल्ड्रन को तैयार कर पाएं जो नियोटरिक इनोवेटर्स है। नियोटरिक का मतलब हुआ जो नई तकनीक से परिपूर्ण हैं, वो वैसे बच्चों को हम पहचाने और उनको हम तैयार कर पाएं। और ये हम अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से जो अटल टिंकरिंग लैब है, जिसे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उसको स्केल करने का दायित्व दिया गया है, उसके माध्यम से हम करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। सर हम लोगों ने कुल ब्रेकअवे सेशन में 15 एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों को रखा था जिन्हें अटल टिंकरिंग लैब की पूरी जानकारी थी और उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट के स्कूली शिक्षा के सचिव हैं, एसपीडीज हैं, पीएम श्री के विद्यालय के प्रिंसिपल्स हैं, सीबीएसई के विद्यालय के प्रिंसिपल्स हैं, कुल ऐसे 22,000 स्टेक होल्डर्स जो लिसनिंग मोड में थे, आज वो हमारे साथ जुड़े और मुख्यतः 4 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की कि ये जो 50,000 ATL बनाए जाएंगे, इनका क्या स्कोप रहेगा और इनको किस प्रकार से स्थापित किया जाए। पूर्व जो ATL बनाए गए हैं उसके सीख के आधार पर ATL को चलाने के लिए किस प्रकार की क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। स्केलेबिलिटी जब करेंगे तो उसको किस प्रकार से हम इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे हम एक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में एक PMU का गठन करेंगे और उसके माध्यम से करेंगे। और इसके लिए जो अन्य अनुषंगी इकाइयां हैं उसका किस प्रकार का सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि SCRTs हो सकती हैं, डाइट्स हो सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और इंडस्ट्री के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो उनसे हम किस प्रकार से सपोर्ट हम ले पाएंगे। मूलतः सर आज की जो परिचर्चा थी वो हम लोगों ने 6 प्रश्नों के आधार पर किया था और ये 6 प्रश्न हम लोगों ने सभी के साथ साझा किया था। तो पहला था कि आने वाले दिनों में जो हम नेक्स्ट जनरेशन ATL बनाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन और कंपोनेंट में किस प्रकार से हम उसको बेहतर कर सके। नेक्स्ट, तो इसमें से जो सुझाव आए थे कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग साझा करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग देखें और जो भी एडवांस इक्विपमेंट लें वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लें। और एक जो चर्चा में बात बहुत स्पष्ट रूप से आई कि ATL के लिए जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी गाइडलाइंस है, उसको सभी भारतीय भाषा में उसे बनाई जाए ताकि देश के सभी राज्यों में सभी बच्चों को हम आसानी से इससे हम वाकिफ करा सकें। और स्कूल के करिकुलम में इसका हिस्सा बनना चाहिए, एक सुझाव आया था। और हमारे विद्यालयों में इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल होना चाहिए। कुछ एक लोगों ने यह भी सजेस्ट किया कि इसके लिए क्रेडिट दिया जाए। तो इन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने नोट कर लिया है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न ये था कि किस प्रकार से हम ATL को चलाएं, या वहां पर शिक्षक चलाएं, या किस प्रकार से हम जो शिक्षक जो ATL इंचार्ज हैं इन विद्यालयों में, उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उनके कॉम्पिटेंसी को विकसित करके एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लाया जा सके। इसमें जो सुझाव हमारे पास आए, जो अगली स्लाइड्स में दिखाया जा रहा है, कि सभी लोगों ने सलाह दिया कि एक डेडिकेटेड फुल टाइम ATL टीचर या ट्रेनर होना चाहिए ताकि विशेष रूप से नवाचार पर ध्यान दिया जा सके। उनके लिए रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए जो ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में की जाए। लर्निंग मॉड्यूल्स को इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हमेशा करने की आवश्यकता रहेगी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री पार्टनर्स के मदद को लिया जाए ताकि हम अपने ATL इंचार्ज के जो उनका जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको लगातार विकसित कर सके। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न था कि
हमारी प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस क्या हो, क्योंकि ये बड़ी ही सेंसिटिव चीज होती है और अक्सर इसमें विलंब हो जाता है। तो किस प्रकार से हम क्वालिटी एश्योरेंस लाएं ताकि एक प्रोक्योरमेंट ड्रिवन न रहे, कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ साथ हमें एटीएल को एक निश्चित समय सीमा में स्थापित करना है। इसमें जो सुझाव आए थे तो अक्सर हम जेम के माध्यम से ही करते हैं। तो जेम को लोगों ने कहा कि जेम में सिंप्लीफिकेशन लाने की जरूरत है और जेम में एक एटीएल के लिए यदि अलग से एक विंग बना दिया जाए तो लोगों को आसानी होगी। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस एटीएल इक्विपमेंट के गाइडलाइंस जारी किए जाएं और जिस प्रकार की सामग्री सप्लाई हो रही है उसकी क्वालिटी एक इंडिपेंडेंट असेसर के माध्यम से भी कराई जाए ताकि हम श्योर रह सकें कि जो हम सामान एटीएल के लिए ले रहे हैं वो एक निश्चित मानक के ऊपर है। और प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस और गाइडलाइंस में सभी ने कहा कि उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है, तो हम उनको इसके लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग कराने गए और निष्ठा के माध्यम से भी इसमें कराया जा सकता है और ऑफलाइन भी ट्रेनिंग कहने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट, क्या मैकेनिज्म ऐसा किया जाए ताकि एटीएल जो है वो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंटली थोड़ा हो सके। कहीं पर हर एक राज्य की आवश्यकताएं अलग हैं और वहां पर इंडस्ट्री की जो प्रेजेंस है वो भी अलग अलग है, तो किस प्रकार से उसको हम कस्टमाइज कर सकें। तो इसमें कस्टमाइज टेम्पलेट्स डेवलपमेंट करने के लिए हमें सुझाव प्राप्त हुए ताकि रीजन वाइज, स्पेसिफिक वाइज अलग अलग टेम्पलेट हो सके। सपोर्ट स्ट्रक्चर को भी इसी के लिए हुआ कि संबंधित स्टेट डिपार्टमेंट्स और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के इसे विकसित किया जाए और रीजनल शोकेस और कंपटीशन एग्जीबिशन भी कराया जाए। एक ये भी अभिमत हुआ था कि हर एक विद्यालय में एक हम एग्जीबिशन स्पेस बनाएं जिसमें जो भी एटीएल के द्वारा विगत वर्षों में विकसित हुआ है उसको हम डिस्प्ले कर पाएं ताकि लोगों को उसको बेहतर आइडिया हो सके। नेक्स्ट, एससीईआरटी और दो दूसरे रेलेवेंट स्टेट लेवल एंटिटीज हैं, उनको कैसे हम उनसे मदद ले सके पॉलिसी के फ्रेमवर्क में और गवर्नेंस के मैकेनिज्म में, इस पर भी हम लोगों ने उनसे सुझाव मांगे थे। नेक्स्ट, और इसमें सुझाव आए थे कि ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग होनी चाहिए और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करके उनको इस अभियान से उनको जोड़ने की आवश्यकता है। और पहले भी कहा था कि एटीएल को स्कूल करिकुलम और पीरियड में उसको डालने की आवश्यकता है ताकि एटीएल एक निश्चित रूप से स्कूल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हो सके। नेक्स्ट, व्हाट और स्टूडेंट लेड इनोवेशन पाथवे के लिए एटीएल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, इसमें लोगों ने कहा था कि एक एक्सपोजर टूर होना चाहिए, इंटर्नशिप्स की भी प्रस्ताव आई थी और जो हमारे एटीएल के बच्चे हैं वो लोकल इंडस्ट्री में जाएं, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में जाएं और वहां से भी एक रिवर्स मूवमेंट हमारे एटीएल में हो। और एक सुझाव ये भी आया था कि एटीएल को 2 लेवल पर कंसीव किया जाए, हम बेसिक लेवल पर एटीएल दें लेकिन जो एटीएल कुछ अपने में प्रॉमिस दिखाए और दिखाए कि उसमें बेहतर करने की शक्ति है तो उसको एक हायर लेवल पर ले जाकर के एक एडवांस लेवल पर एटीएल भी स्थापित किया जा सके और उसके लिए उसकी व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, करीब 22,000 लोग आज जुड़े हुए थे सर, तो उनको भी हम लोगों ने कहा है कि आगे के 1-2 दिनों के अंदर एक हम लोगों ने ईमेल उनके साथ सर्कुलेट किया है कि उस पर भी यदि कुछ और लिख करके हमें अपने विचार साझा करेंगे तो हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए मंडे तक हमारे जो सुझाव हैं उसको हम अंतिम रूप दे पाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस पोस्ट बजट वेबिनार के समापन सत्र में आज संबंधित मंत्रालयों के माननीय मंत्रीगणों की सम्मानित उपस्थिति है। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। सर। नमस्कार। पोस्ट बजट वेबिनार आज सुबह से प्रारंभ हुआ है। इस वेबिनार में समापन सत्र में जुड़े हुए सभी मेरे साथी मंत्रीगण, सचिवगण और
अलग अलग डिपार्टमेंट में के साथ जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्ट बजट वेबिनार के संदर्भ में जब मैं बात करूं तो मेरे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण पहलू हुई है और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति देश और दुनिया में क्या है, कितने एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हुई, पिछले एक दशक में मोदी गवर्नमेंट ने जो एफर्ट करा, ये विषय मैं आपके सम्मान में रखना चाहता हूँ। किसी भी देश की सबसे ठोस और महत्वपूर्ण संपत्ति स्वाभाविक तौर पर उसके लोग होते हैं। उनकी क्षमता को हम किस तरह देश की प्रगति में काम ला सकते हैं, उसके लिए एक रोड मैप बनाना एक चुनौती जरूर है, लेकिन हम भी तैयार उसके लिए हमेशा है। आज जब हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में इन्वेस्ट इन पीपल ये न सिर्फ वक्त की मांग है, बल्कि एक देश की सबसे बड़ी जरूरत भी है। एक इन्वेस्टर हमेशा मिड टर्म मिशन और लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ता है। हम आज अगर इन्वेस्टमेंट इन पीपल की बात कर रहे हैं, तो हमारा भी एक मिशन है, हमारा भी एक विजन है। हमारा मिशन है कि हमारी युवा शक्ति स्किल्ड हो, और हमारा विजन है कि दुनिया के हर कोने में हमारे इंडियन टैलेंट की धमक सुनाई दे। इन्वेस्ट इन पीपल कभी भी सिर्फ एक आर्थिक निर्णय नहीं होता है, ये हमारा देश के प्रति एक सोशली, मोरली, कल्चरल कमिटमेंट है। इस सोशल स्टेबिलिटी, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ताकि एक एम्पावर्ड, एजुकेटेड और स्वस्थ समाज विकसित भारत के लिए तैयार हो सके। अभी यहाँ जैसे मुझसे पहले मिनिस्ट्री के साथियों ने इस विषय पर अपनी बातें रखी, मुझे पूरा यकीन है कि सशक्त भारत की दिशा में आप सभी का विजन क्रांतिकारी साबित होगा। इन्वेस्ट इन पीपल की दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें डे वन से अपने एक्शन प्लान पर काम कर रही है। जॉब क्रिएशन, सोशल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर हमारी श्रम शक्ति को जरूरी हेल्थ कवरेज और वर्कफोर्स को उचित स्किल सेट के साथ एम्पावर्ड करने की पॉलिसी हमेशा हमारी प्राथमिकता रही। हमारी सरकार ने 2014 से 24 के बीच 17.1 करोड़ जॉब क्रिएट हुए हैं, और सिर्फ 2023-24 में ही 4.6 करोड़ नौकरी पैदा हुई है। ये डेटा दिखाता है कि बीते 10 सालों में देश विदेश की कंपनियों ने भारत के युवाओं में निवेश करने की गति बढ़ाई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की मैं बात करूं तो 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था, जो एक 5 साल के बाद 2023-24 में वो घटकर 3.2% रह गया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 17-18 में एम्प्लॉयमेंट रेट 17-18 में 46% था, वो 5 साल में बढ़ के 58% हो गया है। मैं 5 साल इसलिए बोल रहा हूं कि पहले तो एक डेटा क्रिएशन की कोई सिस्टम ही नहीं, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैकेनिज्म से देश में डेटा क्रिएशन हो रहा है। ये डेटा ILO ने भी मान्य करा है, वर्ल्ड बैंक ने भी मान्य करा है, दुनिया के सभी प्लेटफॉर्म पर
ये डेटा को स्वीकृति मिली, इसलिए मैं डेटा के साथ उसको कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं सामान्यतः यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं तो 5 साल पहले जब हमने डेटा क्रिएट करना चालू करा तो 17% था यूथ में, तो 5 साल के बाद वो 7% कम होकर 10% हो गया। यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट, मैंने पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करी, लेकिन यूथ में एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? तो जब ये डेटा पीएफएल का डेटा क्रिएट नहीं होता था और ये डेटा क्रिएट होना चालू हुआ 5 साल पहले, तो एम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में 31% था, वो बढ़ के आज 41% हुआ है। ये बताता है कि देश में नौकरियों का सृजन हो रहा है। अगर मैं बात फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की करूं तो 5 साल पहले फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.6% था, जो आज 3.2% है, यानी कि मेन और वुमेन में अनएम्प्लॉयमेंट सेम हो गया। वैसे ही फीमेल का एम्प्लॉयमेंट रेट भी देखो, वो जो 22% था उसमें से बढ़ के आज 40% हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है, हमारे इमर्ज इकोनॉमी का एक सिंबल है। विकसित भारत की दिशा में, भारत की जिस ज्ञान परंपरा को समृद्ध करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बढ़ रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस ज्ञान में जी यानी कि गरीब जो है, पिछले 10 सालों में इसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाए जा चुके हैं। हर हाथ को रोजगार मिल रहा है, उनके स्किल्स को सम्मान दिया गया है। ये सब उसी का ही नतीजा है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024 और 26 के तहत भारत का सोशल सिक्योरिटी कवरेज 10 साल पहले तो 18% था, बाद में बढ़ा 24% हुआ, लेकिन एक दशक के बाद हमारा सोशल सिक्योरिटी कवरेज 48% हो गया है। और ये केवल जो 48% हुआ है, ये भारत सरकार की स्कीम है, और उसमें भी मुफ्त अनाज योजना का कवरेज तो उसमें शामिल नहीं करा गया है। ये भी शामिल जो करा जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है उसको इंक्लूड करी जाए तो 68% एबव होगा। और आज हम जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो डेवलप्ड कंट्री में भी सोशल सिक्योरिटी 60 से 90 100% है। तो हम आज इतने बड़े देश 1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाला देश में हमारी सोशल सिक्योरिटी आज डेवलप्ड कंट्री के बराबर जा रही है। ये देश बदल रहा है, उसकी निशानी है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, स्वनिधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, कौशल्य विकास योजना हो, मनरेगा जैसी योजना हो, ये सब योजना से जॉब क्रिएशन हो रहा है। इस वक्त देश की हर दिशा में कहीं न कहीं आईआईटी, आईआईएम, आईआईएमएस बन रही है। हर रोज 33 किलोमीटर से ज्यादा सड़क निर्माण देश में आज हो रहा है। इन्हें भारत की श्रम शक्ति ही तैयार कर रही है। ये जब तैयार होते हैं तो इसमें भारत का युवा ही रोजगार पाता है। इस वक्त 1.57 लाख डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप यूथ को एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस देश में दे रहे हैं। इससे 16.6 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएशन का भी काम ऑलरेडी हुआ है। मोर देन 100 यूनिकॉर्न इस देश में स्टार्टअप कल्चर को बूस्ट कर रहे हैं, जबकि 2013 में ये बस 4% थे और केवल 4 थे। और 2024 में हम 4 से 118 तक आज उसको लाए। ये आंकड़ा बताता है कि और हाथ को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है, बल्कि अब वो रोजगार देता भी है। इन्वेस्टमेंट इन पीपल के महत्व को अब वो युवा
बिजनेसमैन भी समझ रहा है, जिसमें कुछ साल पहले किसी और ने इन्वेस्ट किया था और आज वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। यूथ जनरेशन को एम्पावर्ड करने के लिए, उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोदी जी के विजन से स्टार्टअप, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया ने करोड़ों की संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम प्रभावित तौर पर किया है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार यंग ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी 2013 में 33% थी, वो बढ़कर 2024 में एक दशक के बाद 54% हो गई है। मोदी जी की सरकार 2014-15 से 22-23 में कृषि क्षेत्र में 4.6 करोड़ जॉब पैदा हुई है। पहले की सरकारों में वो दौर भी था जब लेबर शॉर्टेज की कमी से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जूझ रहा था, पैदावार लगातार कम हो रही थी, इन्फ्लेशन रेट हाई होता जा रहा था, मगर एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोगों में इन्वेस्ट करने के महत्व को इस सरकार ने समझा और उस पर काम भी किया गया। नए भारत का किसान खेतों में फावड़ा भी चलाता है और ड्रोन भी उड़ाता है। आज का अन्नदाता ट्रांसफॉर्म एंड अपडेटेड वर्जन के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े एक्सपर्ट नेशन के तौर पर आज उभर रहा है। 2024-25 के केंद्रीय बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ELI की घोषणा की गई और इस योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना का एम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को बूस्ट करके स्टार्टअप को सपोर्ट करना था, नौकरियों को फॉर्मल रूप देकर और रोजगार क्षमता में सुधार करके 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करना था। हमने PLI स्कीम की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन ELI लाके देश के युवाओं की जॉब को सुनिश्चित करना ये बहुत बड़ी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस कर रही है, नेशनल कैरियर सर्विस स्कीम और मॉडल कैरियर सेंटर। इसका एम जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट करने का है। ये लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर काम करता है, जहां जॉब खोजने वाला व्यक्ति भी होगा और जॉब देने वाली कंपनी भी होगी। इसमें विदेश में भी नौकरी के अवसरों की जानकारी पोर्टल से युवाओं को प्राप्त हो। हम इस पर भी गति से काम कर रहे हैं। हम व्यापारी नहीं हैं, जन सेवक है। जन सेवा के लिए आज हम इस मंथन में भागीदार बन रहे हैं। मोदी जी की लीडरशिप में हमारे लिए नेशन फर्स्ट और खुद को सबसे आखिर में रखने की परंपरा है। इसलिए हमारे इन्वेस्टमेंट इन पीपल के केंद्र में भी जन कल्याण की भावना रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स न्यू एज इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ केयर सुविधा मिली थी। इस पहल से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स, जो अभी मेरे सेक्रेटरी ने बताया, को लाभ होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जब हेल्थ फॉर ऑल का मंत्र देते हैं तो उसमें 140 करोड़ देशवासियों की चिंता होती है। सभी 1 करोड़ गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इसके जरिए इन श्रमिकों को पहचान पत्र मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग वर्कर्स न्यू एज सर्विस इकोनॉमी को गति देने में अहम रोल निभाते रहेंगे। इस श्रम को हम सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ भी साझा कर रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में
रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त होती रहे। इसमें 30 करोड़ से अधिक अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है और ई श्रम मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। अभी वर्तमान में हमने केंद्र की 12 योजनाओं को ई श्रम के तहत इंटीग्रेट करने का काम भी किया है। इसके साथ ही ई श्रम पोर्टल अब 22 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो चुका है। जब बात हमारे श्रमवीरों की और उनके मिलने वाले हेल्थ सपोर्ट की हो रही है, तो उस हेल्थ सपोर्ट को उन्हीं के घर में पैदा करने वाली हमारी विजन को भी मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। इस वक्त देश में 10 ESIC मेडिकल कॉलेज निर्माण अप्रूव हो चुके हैं और 10 अन्य कॉलेजों को बनाने के लिए 5 प्रपोजल तैयार की जा चुकी है। हमारे मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि इन मेडिकल कॉलेजों में 50% तक का आरक्षण हमारे इन्हीं श्रमिकों के बच्चों को मिले, ताकि हर श्रमिक भविष्य में गर्व के साथ ये कह सके कि उनका बेटा या बेटी आज डॉक्टर है। ये बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन पीपल की नहीं, बल्कि इमोशन की भी है। हम अपने काम से 3 पीढ़ियों को सुनहरा भविष्य देने की ताकत रखते हैं। आज हम जब अपने लोगों में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट पूरा देश और पूरी अगली कई जनरेशन को मिलता रहेगा। विकसित भारत का सफर लंबा है और उसके लिए मेहनत भी ज्यादा लगेगी, मगर अमृत काल की इस बेला में हम तैयार हैं और भारत की प्रगति के लिए हम सब लोग भारतवासी समर्पित भी हैं। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूँ। नमस्कार। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी सहित सभी मंत्रीगण, सम्मानित सभी अधिकारीगण, पैनलिस्ट, आज पोस्ट बजट वेबिनार के अवसर पर देश के नागरिकों में निवेश, विकसित भारत की आधारशिला है। विशेष रूप से जिसके केंद्र में नारी है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय बजट 2025-26 सबके साथ सबके लिए, जो पोषण, प्रगति और समावेशी विकास सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है, जो कि अमृत काल की ओर बढ़ रहे भारत की यात्रा के लिए मानव पूंजी के रूप में एक मजबूत नींव रखता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड न्यूट्रिशन केवल कल्याणकारी अवधारणाएं नहीं है, यह भारत के भविष्य की आधारशिला है। और वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास जीवन के पहले 6 वर्षों में ही हो जाता है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल में हमारा आज का निवेश भारत के भावी कार्यबल की क्षमताओं और उत्पादकता को परिभाषित करेगा। और इस वर्ष के बजट में घोषित पूरक पोषण के लिए लागत मानदंडों में संशोधन एक परिवर्तनकारी कदम है, और यह संशोधन वैश्विक पोषण मानकों के अनुसार समायोजित होने के कारण हमें स्थानीय विविध रूपों से प्राप्त और गुणवत्तापूर्ण पोषण
प्रदान करने में मदद भी करेगा और इसके लाभार्थियों में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 8,79,00,000 से अधिक बच्चे, 1 करोड़ से अधिक गर्भवती और लैक्टेटिंग महिलाएं तथा आकांक्षी और उत्तर पूर्वी जिलों में 22 लाख से ज्यादा किशोरियां भी इसमें शामिल हैं। यह बढ़ा हुआ निवेश सीधे तौर पर माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करने के हमारे लक्ष्यों में योगदान भी देता है, जो कि SDG 2 के जीरो हंगर और SDG 3 के गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। हमारी यात्रा केवल पोषण तक ही सीमित नहीं है। मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत हमारी पहल पोषण भी पढ़ाई भी एक सफल नवाचारी मॉडल है, जो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को एकीकृत करते हुए प्रत्येक बच्चे के लिए समग्र विकास सुनिश्चित करता है। आज सभी आंगनवाड़ियों में 3 से 6 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उनके संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की नींव को मजबूत कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के साथ घनिष्ठ साझेदारी के अंतर्गत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज और नवचेतना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड सिमुलेशन के रोल आउट के माध्यम से पोषण, लर्निंग आउटकम्स और आजीवन उत्पादकता के बीच की कड़ी को मजबूती प्रदान की जा रही है। भारत के मिशन पोषण के केंद्र में नारी शक्ति है और हमारे 24,88,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा चैंपियन के रूप में काम भी कर रही हैं। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की हम सराहना भी करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों के प्रशिक्षण के लिए पोषण ट्रैकर जैसे डिजिटल टूल्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम में निवेश कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिक दक्षता और देखभाल के साथ सेवाएं प्रदान कर सके। यह प्रयास न केवल महिलाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है, बल्कि केयर इकोनॉमी को भी मजबूत करता है, जिसमें महिलाएं भारत के विकास की कहानी के केंद्र में आती हैं और सभी 13,90,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 24 भाषाओं में उपलब्ध पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि पोषण के लिए उपलब्ध अनाज का हर दाना समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचे। और हाल ही में नए जोड़े गए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और रियल टाइम डेटा कलेक्शन जैसे फंक्शंस द्वारा सेवाओं में पारदर्शिता के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है और इससे सेवा वितरण को बढ़ावा भी मिल रहा है। हम आपूर्ति श्रृंखला और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की खोज कर रहे हैं। इसी तरह जन सहयोग के बिना सरकार कुपोषण जैसी बड़ी चुनौती से अकेले नहीं निपट सकती है। इसलिए जन आंदोलन को मिशन पोषण 2.0 के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में देखा गया है। जन आंदोलन के अंतर्गत पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के माध्यम से हम समुदायों को बेहतर पोषण प्रथाओं को अपनाने के लिए
प्रेरित भी करते हैं, जिससे पोषण परिणामों में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप बच्चे सुपोषित और महिलाएं सशक्त बन रही हैं। देश के नागरिकों में निवेश करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता भी होती है। इसलिए सरकार हमारे पोषण कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए CSR संगठनों, सामाजिक उद्यमों और स्वयंसेवी संस्थानों के साथ साझेदारी का भी स्वागत करती है। हम अपनी आगे की राह 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने की ओर तेजी से गतिशील हैं और हमारे लक्ष्य भी स्पष्ट हैं। वर्तमान के 3 से 6 वर्ष के बच्चे बनेंगे भविष्य के सशक्त युवा। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% तक भागीदारी होगी सुनिश्चित और हर आंगनवाड़ी बनेगी पोषण और पढ़ाई का केंद्र। निरंतर निवेश, मंत्रालयों के बीच समन्वय और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए पोषण, विकास और सबका साथ सुनिश्चित करते हुए हम भारत की केयर इकोसिस्टम को बदल सकते हैं। जैसा हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो हम भी आप सबसे आग्रह करेंगे कि हम सामूहिक रूप से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को केवल एक योजना नहीं बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों। और मुझे पूरा विश्वास है कि नारी शक्ति, जन शक्ति और सरकार शक्ति, हम सभी एक साथ मिलकर एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध और समावेशी भारत का निर्माण कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैडम। अब मैं दूरसंचार मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। ओवर टू यू सर। परम आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार प्रगति मंत्री आदरणीय श्री JP नड्डा साहेब, और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन HRD धर्मेंद्र प्रधान जी, मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मंडाविया साहेब, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, MOS इंडिपेंडेंट चार्ज स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जयंत चौधरी साहेब, member NITI Aayog Professor Vinod Paul ji, and all our friends, colleagues, and co-passengers on this journey of transforming India under the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. It is indeed a great honor and a privilege for me to be addressing all of you through this webinar on a topic that I believe is goes beyond infrastructure, goes beyond the brick and mortar story of India, but really, in effect, brings alive the real wealth in the world today, which is our talent pool, our skill pool, and our capability on human resource development. Our people concentrated on our theme today, investing in people. Times have changed a lot over the last 3 to 4 decades. There was a period when capital was the main barrier to entry for innovation, for ideas, for new thinking. Capital today has become a commodity. It is human resource, human capability, ability to innovate, disruptive thinking, a new paradigm shift
that today holds value in itself. And that is what our Prime Minister has concentrated on, not only in this budget, but over the last decade, as India has transformed. Reform, transform, perform is not only a mantra, it is a code that all of us live by. It is a code not only for public servants, it is a code not only for our civil servants, but it is a code that the Prime Minister has time and time again stressed, a code for all 140 crore Indians. If we are really to see the transformation of India, as he says in his own words, संकल्प से सिद्धि तक, अगर वो परिवर्तन हमें लाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को एक विकसित भारत में परिवर्तित करना है, और भारत को अगर एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, तो परिवर्तन एक एक व्यक्ति की अंतर आत्मा से आनी चाहिए. और इसी सोच विचारधारा के साथ, when we are talking today, we are not talking about only the infrastructure spend on broadband connectivity. It gives me great pride, not only as a worker of the Bharatiya Janata Party, but as a citizen, to today tell the world that India has embarked on a path that has not been tread before by any other nation. When we talk about BharatNet and amended BharatNet, our vision, our sankalp, our aspiration to connect every single village across the length and breadth of our country with broadband coverage. We have traversed a great journey where we had only close to about 250 million internet users. Today, India has 974 million internet users. A country that could only boast of 60 million broadband users of 2 Gbp and more. Today, India has close to 942 million broadband users. And accompanying that, and this is a point that I would like to stress with all of you, where we have increased connectivity, where we have engaged everyone onto the digital platform. At the same time, we have applied Moore's law in terms of costs, where costs have fallen exponentially. Part 2, Part 1. 1 minute of voice would cost 50 paise a minute in 2014. Today it costs less than 3 paise a minute. 0.03 paise a minute. At the same time, when we look at broadband costs, 1 GB of data would cost 287 rupees. Today it costs only 9 rupees. We are in India today the cheapest data provider in the world. And correspondingly, we have gone up the consumption path in terms of data. Today, the average consumer consumes close to 22 GB of data per month, which I would like to mention to everyone on this webinar is the highest data consumption in the world today. So what this infrastructure will be, which is the world's largest rural broadband network, $16.1 billion is going to be invested in this broadband network. It will be the equivalent of the Bharatmala highway, where we have a cement and concrete physical highway across the length and breadth of India. We are today, under the Prime Minister's leadership, building a digital highway. And that digital highway will allow every single citizen across the length and breadth of our country to be connected with not only the rest of India, but to be connected with the world. And what that opportunity gives us in India
if we look directly at 3 or 4 verticals: education, healthcare, and governance, and economic empowerment. This is not an infrastructure play. This is nothing less than a social revolution, a development revolution. And what this will result in, if we start with connectivity, it's a vision for universal digital access. It's a promise of equality in opportunity. And it is also an upsurge in the sustainable growth of our country. Now, with this dynamic and with this paradigm, there is going to be transformation across multiple verticals. But today I would like to concentrate on 3 verticals in particular. The first is revolutionizing education. Every child and every classroom will be connected onto the knowledge superway, not the highway, but the knowledge superway of the world. Imagine this, that not only are we going to be able to provide equitable access to every single student, and not only every single student, but every teacher as well. Because as every student goes up the learning process, so must the teacher. Teacher learning is a very fundamental process of the educational imperative. And this digital superhighway will not only allow our children to engage themselves with the world, with smart classrooms, AI-powered learning, virtual teacher training programs, but also along with Samagra Shiksha, along with Nipun Bharat, along with Ulhas, really connect into the lifeblood of knowledge-seeking processes. Imagine a young girl in a far-flung village in rural Madhya Pradesh or rural Orissa, sitting in her house coding for one of the big AI companies across the world. Till now, only a dream, but when this digital broadband comes into place, will become a reality. Imagine a teacher to be able to improve his repertoire and improve his own teaching process, connecting onto the Stanford network or Harvard network and engaging into research projects or capsules of learning from that network. That will no longer be a dream, but will become a reality with this digital superhighway. And similarly, in the case of health, this digital superhighway, indeed, ladies and gentlemen, will also help in saving lives. This BharatNet program will allow telemedicine, e-consultations, digital health records, all come to the doorstep of every single Indian across the length and breadth of our country. It will aid and give impetus to projects like eSanjeevani, Telemanas, where rural patients will no longer have to wait to go to district hospitals, but on a virtual network will be able to get referrals, doctor's appointments, and each one of their issues being treated on a digital platform. You will also have an opportunity where professional doctors sitting in AIIMS in Delhi will be able to perform robotic surgeries in hitherto unmedicated areas. And that capability will be brought to life with this broadband new system that we are talking about. So no one will be denied medical attention due to the tyranny of distance or the shackles of affordability. The third area is the issue of economic empowerment and unlocking opportunities for each and every one of our citizens. And this BharatNet project will not only aid in skilling each one of our young men and women
across the length and breadth of our country, but will allow them to have economic independence, will allow them to come up with new paradigms and new business thoughts and business ventures, will allow them to connect with the world. And imagine a rural craftsperson, a weaver in, let's say, Chanderi in my parliamentary constituency, that can now sell her woven Chanderi sari to an aggregator across the 7 seas. That will be possible with this digital broadband. At the same time, think of a young entrepreneur who can launch a business from a small town, and at the same time, a student who can pursue higher education from his own village by logging into courses across the world. So this is not just a promise for infrastructure, but it's the true essence of empowerment, which is the Prime Minister's goal. So in conclusion, I'd like to say this, that we are changing the very foundation of how we function as a country through this digital highway. We are ensuring equal empowerment, a progressive India, a nation where every child will have access to quality education, a nation where every patient will receive medical care, a nation where every aspiring entrepreneur can dream, innovate, and build. And so therefore, I'd like to invite all of you to come and participate in this journey. Build an India that is built on innovation. Build an India that is built on inclusivity. Build an India that is built on empowerment. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. अब मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से उनके संबोधन के लिए अनुरोध करता हूं। सर। धन्यवाद। आज के इस वेबिनार में, पोस्ट बजट वेबिनार में जुड़े हुए हमारे इस बैठक की अभी अध्यक्षता कर रहे हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी मित्रों, हमारे अभी साथियों ने अपने अपने विभाग से संबंधित पोस्ट बजट वेबिनार के बारे में, जो हमारा थीम 4 है, उसके बारे में अपने अपने विभाग में किए गए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहे हैं, उस पर उन्होंने चर्चा की है। मैं भी अपने चर्चा को अपने विभाग तक सीमित रखता हुआ, जो विषय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इस पर, इस थीम पर जो हम सब लोगों ने काम किया है, उस पर चर्चा करूंगा। जहां तक इन्वेस्टिंग ऑन द पीपल का सवाल है, आज ही हमको हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इन्वेस्टमेंट इन पीपल और इन्वेस्टिंग इन पीपल की जब हम बात करते हैं तो उसके 3 पिलर्स हैं, शिक्षा, स्किल और स्वास्थ्य। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा के बारे में बताएंगे, कम्युनिकेशंस का किस तरीके से रोल है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी बताया है, और हमारे स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा विषय जो हमारी लेबर सेक्टर है, उसमें मनसुख भाई ने भी अपने बातों को पर प्रकाश डाला है। अब जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम ये जरूर कहेंगे कि बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वह लोगों पर है, और जब हम लोगों की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग में इस बार, वैसे तो हमने हेल्थ में होलिस्टिक अप्रोच को 2017 में जोड़ा है, और 2017 की हेल्थ पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी हमारी कभी सिर्फ क्यूरेटिव पार्ट पर जोर देती थी, वो आज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और साथ में पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, इस तरीके से होलिस्टिक अप्रोच में
आज हेल्थ केयर को हम देख रहे हैं। और होलिस्टिक हेल्थ केयर की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आयुष और आयुष के साथ अन्य विधाओं को भी हम जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि सभी विधाओं का मानवता की सेवा के लिए उपयोग हो सके। इस वर्ष बजट में हमारे 2 विषयों पर हमने जोर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से ये घोषणा की थी कि 75,000 मेडिकल सीट्स ऐड की जाएगी और ये बहुत बड़ी घोषणा रही है और इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, इस पर हमने ध्यान देने का प्रयास किया है। और दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि हम डे केयर सेंटर्स, कैंसर केयर सेंटर्स, इसको हम विकसित करेंगे। हमें मालूम है कि कैंसर का इलाज लंबा चलता है और उसमें कीमोथेरेपी की कई साइकिल्स होती हैं और उसके लिए लोग बड़े बड़े अस्पतालों में एंगेज रहें और बड़े बड़े अस्पतालों को एंगेज करके रखें। इससे अच्छा ये है कि हम कैंसर के डे केयर सेंटर्स बनाएं जहां कीमोथेरेपी के बाद पोस्ट कीमोथेरेपी उनके उपचार के लिए उपयोग में आ सके। ऐसे 2 विषयों पर जोर दिया गया और इसीलिए जब ये अनाउंसमेंट की बात कही गई तो मुझे खुशी होती है इस वेबिनार के माध्यम से सभी विभागों को ये बताते हुए कि 75,000 मेडिकल सीट्स में से पिछले ही साल यानी 2024 में घोषणा हुई, 24-25 के अंतर्गत ही 13,000 मेडिकल सीट्स ऐड कर दी गई। और इस साल यानी 25-26 में बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेकर के चले तो भी हम 10,000 सीट्स ऐड करने वाले हैं और उसके माध्यम से हम मेडिकल सीट्स के दृष्टि से एक कारगर कदम उठाते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूं कि डे केयर सेंटर में हम लोगों ने तय किया है, यानी डे कैंसर केयर सेंटर में हम लोगों ने तय किया है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव 1 कैंसर केयर सेंटर, डे कैंसर केयर सेंटर। अब इस वर्ष हम लोगों ने 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स को हमने स्थापित करना है और इस लक्ष्य को लेकर के हम चले। जब हम मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हम मेडिकल हेल्थ सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग की बात भी करते हैं। मैं यहाँ आपसे एक बात को शेयर कर दूं कि लगभग 1,75,000 हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य केंद्र खड़े किए और ये आयुष्मान आरोग्य केंद्र, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी जो फर्स्ट कांटेक्ट पेशेंट का या जिसकी हेल्थ की हम चिंता कर रहे हैं उसका करने का कांटेक्ट पॉइंट होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इसमें हम लोगों ने 12 टाइप्स के पैकेजेस की बात कही है और 12 टाइप के पैकेजेस के साथ साथ हम लोगों ने 30 साल की उम्र में वॉलंटरली स्क्रीनिंग की बात भी कही है। और स्क्रीनिंग में 3 तरीके के कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, महिलाओं के सर्विक्स कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, और पुरुष और महिला दोनों के लिए ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग की बात कही है। उसी तरीके से हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये दोनों के विषयों के बारे में भी स्क्रीनिंग को हम लोगों ने जोड़ा है। हम लोगों ने नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करने की बात कही है। तो एनक्वास में हम सेल्फ असेसमेंट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो 1,75,000 सारे देश में विद्यमान है, जो सारे देश के लोगों की चिंता करने वाले हैं, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हों, नेशनल क्वालिटी असेसमेंट स्टैंडर्ड्स बने, उसको अडहर करने वाले हों और एक हम क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे सकें, इस बात का हम प्रयास इसमें करने का कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 2014 में हमारे पास 387 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे। आज हमारे पास 780 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और 130% ऑफ अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट्स का इजाफा हुआ है। उसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट में
135% सीट्स का भी इजाफा हुआ है। मैं आज के मंथन में एक बात और बताना चाहता हूं कि जो हमारे हेल्थ सेक्टर की दृष्टि से चर्चा में आया है उसको हम लोगों ने बखूबी ध्यान में लिया है और मेरे अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय इन सारी बातों को की चिंता करेंगे। जैसे मंथन में सुझाव आया कि हम अपनी फैकल्टी डेवलपमेंट को एक हम मैंडेटरी बनाएं कि पीरियोडिक हमारी फैकल्टी की डेवलपमेंट का प्रोसेस चले। बहुत अच्छा सुझाव है और इस सुझाव को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उस नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ बातचीत करते हुए इसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक सुझाव और भी आया है क्योंकि हम एक लंबे लीप ले रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में और नीति आयोग का भी इसमें समर्थन मिलेगा। वीके पॉल साहब इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि हम टाइमली रिक्रूटमेंट आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द फैकल्टी गैप, यानी जो फैकल्टी गैप होती है उसमें टाइमली हम रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि रनिंग इंस्टीट्यूशंस में कोई प्रॉब्लम ना आए और मेडिकल एजुकेशन स्मूथली चल सके और एनएमसी का उनको समर्थन बराबर मिलता रहे। इस बात को भी हमको ध्यान में लेने की जरूरत है। अगर हमने मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करना है तो एक और सजेशन आया है कि हम फैकल्टी पूल बनाएं और वो फैकल्टी पूल जो है वो मेडिकल फैकल्टी को शेयरिंग बेसिस पर इन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस विच आर इन द विसिनिटी। 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब 2 मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग किस्म की फैकल्टीज रखे, इसके बजाय हम लिवरेज कर सकते हैं कि विसिनिटी में अगर 2 मेडिकल कॉलेजेस हैं तो हम फैकल्टी को उसमें उपयोग कर सकते हैं, उसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं, फैकल्टी को हम शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके की बात भी आई है। मुझे धर्मेंद्र जी प्रदेश का जो ध्यान में आता है, जब मैं प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय हम लोगों ने नया विषय चलाया था कि हम रिटायर्ड टीचर्स को भी फैकल्टी के रूप में उनको हम विजिटिंग प्रोफेसर्स के रूप में हमने लाने का प्रयास किया था। बड़ा सफल प्रयास हुआ था और हमारे जो नए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस थे जो अनवायबल थे उनको हम वायबल करने में हमें सफलता मिली थी। तो इस तरीके से उसको भी हम करने में सफल होंगे ऐसा मेरा मानना है अगर इन सुझावों को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और हमारी कंपिटेंसी है उसको बढ़ाने के लिए एजुकेशन को हमको प्रैक्टिकल स्किल्स को भी हमको प्रोत्साहन देना पड़ेगा और हमें अपने करिकुलम को, अब करिकुलम हमारा मेडिकल एजुकेशन का बहुत पुराना हो गया है, नई चीजें आ गई हैं। नई चीजों में डिजिटाइजेशन, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ टेलीमेडिसिन, ये सारी चीजें आ गई हैं और हमारे बहुत से डिजिटल हेल्थ टूल्स आ गए हैं और इसलिए हमको करिकुलम और ट्रेनिंग में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जो हम पोस्ट बजट वेबिनार में जब हम बैठे हैं तो हम अपने बजट को इन बातों में भी हम यूटिलाइज करने वाले हैं और इसको हम मीनिंगफुल ट्रांसलेट करने का हम प्रयास करेंगे, ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। एक जरूरत इस बात की भी है कि हम अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर यानी क्लिनिकल एक्सपोजर ये हम यंगर डेज से अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को देना चाहते हैं और इसके लिए फर्स्ट ईयर से ही हम इस गैप को ब्रिज करेंगे थ्योरी और प्रैक्टिस में। और इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इस तरीके से अपने करिकुलम में परिवर्तन ला करके हेल्थ के एजुकेशन को और वाइब्रेंट बनाए और मीनिंगफुल बनाए और जो हमारे वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा हमारे अच्छे डॉक्टर्स निकल सके इस बात को हम उसमें जोड़ सकेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि हम नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी फॉर क्लिनिकल रिसोर्सेज इसको भी हमने एस्टैब्लिश करना है और इसके साथ साथ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ये हमको करने की आवश्यकता है। और जब हम मेडिकल एजुकेशन की को हम फुल इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसमें हम डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम इसको भी हम आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि इसके माध्यम से हमारा मैन पावर बढ़ेगा, क्वालिटी मैन पावर बढ़ेगा और हम अपने हेल्थ फैसिलिटीज में बेटर फैसिलिटीज देने के लिए मैन पावर से
हम उनको युक्त कर सकेंगे। यह और पीजी के स्पेशलाइजेशन में भी यह इंक्रीज जब हम सीट्स कर रहे हैं तो उसमें भी ये लाभकारी होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम अपने एजुकेशन के करिकुलम में सॉफ्ट स्किल को भी हम जोड़ना चाहते हैं और उसमें ट्रेनिंग में भी हमारी एम्पैथी आए, हमारे एथिक्स मजबूत हो, मोरालिटी को हम मजबूती केंद्र स्थान दें और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ें। इस बात की भी आवश्यकता होगी जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपके सजेशंस आए हैं वो सराहनीय हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं आश्वस्त हूं कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन में और जो अनाउंसमेंट्स हमने कही है उसको पूरा करने में ये सारे सजेशंस मेडिकल एजुकेशन को एक्सपेंशन करने में लाभकारी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं जब कैंसर के डे केयर सेंटर की बात करता हूं तो कैंसर का ओवरऑल पिक्चर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मैं ओवरऑल पिक्चर की बात करता हूं तो आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 10 सालों में हमने जहां झज्जर का कैंसर सेंटर बनाया, जो लगभग 700 से ज्यादा बेडेड हॉस्पिटल और 5,500 करोड़ रुपीस खर्च करके स्टेट ऑफ आर्ट यानी जो बेस्ट कैंसर पेशेंट को डिटेक्ट करने से लेकर उनको इलाज करने की जो इक्विपमेंट है, जो मशीनरीज है, जो कहीं और नहीं है, और दुनिया की बेस्ट मशीनरीज वहां ला करके स्टेट ऑफ द आर्ट को हम लोगों ने क्रिएट किया है। उसी तरीके से हमने चितरंजन नेशनल कैंसर यूनिट कलकत्ता, उसको भी हमने अपग्रेड किया है और इसी तरीके से 20 कैंसर केयर सेंटर्स और 19 कैंसर इंस्टीट्यूट, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 कैंसर सेंटर्स, ये हमने टर्शरी कैंसर सेंटर्स ये हमने बनाया है और जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी आज जिनकी संख्या 22 हो गई है, 22, वो सभी में हमने ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, कैंसर और वेरियस काइंड्स ऑफ कैंसर, उसके इलाज के लिए डिपार्टमेंट को हमने युक्त किया है ताकि हमारे लोग उसमें जुड़ सकें और उसमें इलाज करा सकें। तो एक तरीके से कहा जाए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर टर्शरी कैंसर केयर के लिए एक बहुत बड़ा हम लोगों ने उसको रोपिन करने के लिए, ताकि हम कैंसर का इलाज सही ढंग से कर सकें, सही समय पर कर सकें, इसकी फैसिलिटी को हम लोगों ने बनाया है। इस वर्ष इसी को आगे जोड़ते हुए जो हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर या डे कैंसर केयर सेंटर जो हमने बनाने का निश्चित किया है, इस साल हम 200 यूनिट्स में, हम डिस्ट्रिक्ट्स में हम इसको लागू कर देंगे। और आपको जान करके खुशी होगी कि अभी लैंसेट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि कैंसर ट्रीटमेंट का इनिशिएशन यानी डिटेक्शन से इनिशिएशन, ये आयुष्मान भारत के कारण यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 90% एक्सेस टू कैंसर ट्रीटमेंट गरीब लोगों का बढ़ा है, एंड टू द ट्यून ऑफ 90%, और उसमें भी ट्रीटमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द डिटेक्शन। यानी आप समझ सकते होंगे कि एक आम आदमी को कैंसर के इलाज के डिटेक्शन में कितनी दिक्कत आती थी और डिटेक्शन के बाद इलाज तो बड़ा दूभर था। आज हम 90% हम डिटेक्ट कर, जो डिटेक्शन होता है उसको 30 डेज में हम उसके इलाज के लिए आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब हम, जैसे मैंने बताया कि 25-26 में 200 हम कर लेंगे और अगले 5 साल में हम अपना डे केयर सेंटर, डे केयर कैंसर सेंटर, ये हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बना देंगे। इस बात का हम प्रयास करेंगे। हम लोगों ने सिर्फ डे केयर सेंटर ही बनाने की बात नहीं कही है, बल्कि हमने अवेयरनेस और स्क्रीनिंग, इस पर भी बहुत जोर दिया है। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत इसको हम लिवरेज कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम सप्लाई चेन्स को मजबूत करें, टेक्नोलॉजी को लिवरेज करें और डायग्नोस्टिक्स को हम मजबूती प्रदान करें और पेशेंट्स की हम मॉनिटरिंग कर सकें। इन सब पर हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं और मैं अपने साथियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मेहनत करके
ये जो हमारे गोल्स हैं इनको हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और आप सबके सहयोग से होलिस्टिक अप्रोच में हम मेडिकल एजुकेशन को भी जहां बढ़ाएंगे, वहीं मेडिकल हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करेंगे और वहीं कैंसर पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। एक बात और मैं जरूर मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन का एक्सपेंशन हम सिर्फ डॉक्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स इसके ही इंक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा ये इंक्रीज निरर्थक हो जाएगा अगर हमने पैरामेडिक्स को स्थान नहीं दिया। इसलिए हमारा पिरामिड का बेस स्ट्रांग होना चाहिए और पिरामिड के बेस को स्ट्रांग करने के लिए हमारी ये आवश्यकता होगी कि हम नर्सिंग स्कूल्स, पैरामेडिक्स और हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको अभी हम टेक्निकल नो हाउ बढ़ाएं और उनकी ट्रेनिंग बढ़ाएं, उनकी रिक्रूटमेंट बढ़ाएं ताकि हमारे डॉक्टर्स को फैसिलिटेट कर सके और हम एक अच्छा क्वालिटी हेल्थ सर्विस अपने सिटीजन्स को दे सके। तो जो आज का थीम है कि इन्वेस्टिंग ऑन पीपल, ये इन्वेस्टिंग ऑन पीपल में हेल्थ सेक्टर में हम अपने अपने अधिकारियों के साथ दिन रात मिलकर के बजट के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के ट्रेनिंग को पूरा जोर देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सब ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के इस पोस्ट बजट वेबिनार जो कि इन्वेस्टिंग इन पीपल थीम पे आयोजित है, इसके क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे थीम का लीड मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय एवं को लीड कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है। इसी क्रम में मैं अब कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री जयंत चौधरी जी को उनके संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। सर। I take this opportunity to thank and commend my colleagues, my senior ministers, esteemed participants for all the enriching contributions made today during the discussion on the critical theme of investing in people. Our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has issued a clarion call for our nation to collectively deliberate and commit to a path to building a developed India by 2047. And when you start to think, to imagine and dream, is when you build the desire and the willpower to transform. It is clear that this ambition for India is only made possible by investing in the sustainable and the inclusive development of all our communities, regions, and our people. Today's discussions have underscored the importance of convergence, collaboration, cross-sectoral collaboration across key sectors. And we must work with the states, UTs, and all agencies and increase resource allocation for people-centric policies, programs, and schemes. But doing this with an eye to boost efficiency of resource allocation and enable multiplier effects of bottom of the pyramid interventions. I remember Union Finance Minister during the budget, introduction of budget in the House, she had said that this is a budget by the people, of the people, and for the people. The budget is a testament to this commitment with significant investments in education and skill development to create opportunities for every Indian. The budgetary announcements focus on making India a global hub for talent, innovation, and inclusive growth. The government has prioritized education and skill development as the twin pillars of a knowledge-driven economy. And we are empowered by the National Education Policy 2020, which is already transforming India's education sector, and further investments will ensure its full-scale implementation. To enhance STEM learning and innovation, 50,000 Atal Tinkering labs will be set up, building on the success of the existing 10,000 labs across 720 districts. And today, we heard Sanjay Kumar ji, our Secretary in School Education, talking about the ideas, and when he was summarizing it, one of the ideas was that we need to introduce modules of entrepreneurship. We need to select some key students coming through those labs and perhaps give them a second tier and layer of skilling. I think our ministry will take that suggestion on board
and we'll work in close coordination with education. To bridge the skill gap and align it with dynamic industry needs of today and tomorrow, 1,000 ITIs will also be upgraded in a hub and spoke model into aspirational institutes of skills. Also, 5 national centers of excellence will integrate global expertise into skill training programs. Additionally, 500 crore allocation for AI centers of excellence in education will drive the next wave of research, innovation, and personalized learning. In budget 25-26, government has introduced a comprehensive framework to boost global capability centers, and particularly in tier 2 cities, by enhancing talent availability, the infra, and providing regulatory ease. Infra investments will undoubtedly improve connectivity, digital facilities, especially in smaller cities, and will encourage GCC expansion beyond the big cities that we see today. Bangalore, Bangalore, Chennai, NCR, Mumbai. We need them to go into the hinterland. I think the GCC national framework will provide the regulatory ecosystem to enable that. Additionally, my ministry, our Ministry of MS Skills, needs to work in a targeted and strategic manner in collaboration with those GCC that are shifting to tier 2, tier 3 to ensure that the workforce of the GCC is encouraged to constantly update their skills, to upskill and reskill. Also, tax incentives and funding, as per the national framework for GCC, will support innovation, R&D, and will foster a startup ecosystem. Simplified regulatory environment will further ease GCC operation and strengthen India's position as a global GCC hub. Make in India for the world. Recognizing trailblazers in innovation, research, and technology development. The Honorable President recently conferred the Visitors Awards. And I'd like to share, post the event, Dharmenji was also there. Honorable President took out time and in an intimate gathering and exchange, some donors and eminent alumni of very prestigious higher education institutions of India, including IITs, IIMs, Indian Institute of Science. One of the senior alumni donors said something about his life journey. Amongst all the inspiring conversations we had that night, what he said has stayed with me. He said that I was born in a very normal, impoverished Indian rural village setting. No resources to speak of. But the inspiration and spark provided by his parents, somehow he got into IIT. Because he passed out from IIT, he got into IIM. He said, because I passed out of IIM, I got into Harvard. And because I passed out of Harvard, he got into one of the world's leading technology firms. But he said the trail of because that led him to success was made only because of India. Imagine that after 2 or 3 decades of living abroad, the gentleman is continuously engaging with his core Bharatiya Pehchan identity, and he's contributing, he's giving, he's donating, he's giving back to his grassroots. This is why our country must strive to invest in our people, because that is truly our best investment. It is pertinent to appreciate that India's growth trajectory depends not just on isolated initiatives, but on how effectively we can bring together efforts across sectors. When education and skill development systems align with industry needs, where there are partnership with industry, where they have the freedom to even design curriculum, train the trainers, and when the digital infrastructure supports entrepreneurship, and when policies create synergies, break the silos, the impact multiplies, the benefits multiply. So convergence is not just a strategy, it has to be the foundation of sustainable progress. In skill development, it is not enough to just simply train individuals to give a certificate, to do a course. We have to connect the training
with the industry demand, provide career mobility, and ensure that the international recognition of his skills is there. And this is why cross-sectoral collaboration, data-driven policy making, transparency, and an integrated approach to workforce development is critical. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is also working, because as we see, new technology is coming, what we call future skills, AI, machine learning, robotics, even our green sector, green hydrogen mission. All of these are helping make skills aspirational for our youth. We are also working in MSDE in designing a program, special program called Skilling for AI Readiness, SOAR. And SOAR, SOAR, stands as a testament to India's commitment to equipping our youth with future-ready digital competencies. By integrating AI literacy, foundational skills, and understanding of the ethics of AI, what are the platforms available to our young students, and combining it with vocational training from as early as class 6, SOAR aligns with NEP 2020's vision of skill-based education. And the idea here is to foster computational thinking, analytical thinking, problem solving, and industry-aligned foundational AI skills in our young students. It's relevant to understand, we all know today's rapidly evolving landscape, global job market. The question is, how do we ensure that Indians who are doing skilling programs are not left behind? The answer is in the flexibility and mobility. Under the G20 framework, Honorable Minister Mandavia ji also took us through what the ministry is doing. And the Ministry of Labour and Employment is working with International Labour Organization. What they are doing is conducting a feasibility study on developing an international reference classification of occupations by skills and qualification requirements. This initiative aims to promote skill-based migration pathways, transparent pathways, ensure that all our G2G mechanisms with various countries who are looking towards India to fill their own gaps with aging populations, with industry who wants Indian workers, who appreciate Indian workers' commitments and skills. We have to ensure that an Indian professional doing a skill course in a ITI in India, his skills should be transferable when he goes to Germany. His German employers must understand exactly what his competence is. And he must be able to access the global job markets with recognized credentials. In our domestic sectors, the national credit framework has served as an important reform. It is allowing today students and workers to transition seamlessly between vocational training, higher education, industry roles. Imagine a young professional, young boy or girl in a rural town trained in AI under PM Kaushal Vikas Yojana. Through stackable nano credentials, micro credentials, he or she can continue upskilling. Those credentials are now in the DigiLocker. They earn an industry recognized certification, and then they can transition into an international role or job through transnational standards. This is the future through all our efforts that we're working towards, where learning is lifelong, it is appreciated, there's a value put to learning, it is adaptive, and it is accessible to everyone. Lastly, I point to perhaps the one key focus area which is underpinning all initiatives of Government of India. That is women-led development. Women are no longer just beneficiaries of schemes. They are driving change. They're helping us design policy. Today, over 1.3 lakh women-led startups are thriving, contributing significantly to the innovation ecosystem. And it is clear when you have a woman sitting in a boardroom. Incidentally, women's representation in corporate boardrooms leadership is also rising. Now women hold about 18% of board positions in India's top 500 companies.
When a woman is sitting on the highest chair in a corporate boardroom, she is opening pathways for many, many more women. Firms with women at the top, they are hiring more women. And that's what the data tells us. So sustained policy support, leadership development programs will further strengthen women empowerment. Across the country, efforts are made to ensure that women are not merely educated, but they're equipped. Not just literate, but truly skilled. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, which is our biggest scheme. As you know, the latest phase has just been given approval by the cabinet. Under this scheme, we have trained over 70 lakh women, equipping them with skills in technology, trade, craftsmanship, and coding. In our ITIs, you will be amazed. Non-traditional roles, girls are topping our ITI courses in automotive maintenance, plumbing. Girls from villages, tier 2 cities, they are coming forward. And our ITIs have seen a rise in our female enrollment. It has more than doubled since in the last 10 years from 2014 to 15. Our grassroots scheme intervention in skilling is through our Jan Shikshan Sansthan, doorstep skilling. Under our NSQF framework, what you can call the grade, that's the beginning, that's the start. The most rudimentary skilling going up to 2.5 to 3.5. The JSS have empowered 27 lakh individuals. 82% are women. आप समझिए कि गांवों में महिला कितनी उत्सुक हैं, कौशल विकास की योजनाओं का लाभ ले रही हैं, आगे आ रही हैं, समाज को बदल रही हैं. स्टेम में आपको पता है 42% महिलाएं हैं और पूरे विश्व में एक ऐसा आंकड़ा है कि आप कहीं भी आप जाएंगे विकसित देशों में और वहां ये आंकड़ा रखते हैं तो उनकी आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि उनके देशों में भी ये उपलब्धि नहीं है. It's one of the highest proportions globally. Ensuring the increased workforce participation of women is also crucial. So as we approach International Women's Day, it's imperative to recognize that women-led development, it's not about just economic growth, it is about community growth. Because when one woman progresses, entire families, communities, and ultimately the entire nation thrives. With that, I thank everyone. Jai Hind. धन्यवाद सर. अब मैं समापन सत्र के अंत में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके संबोधन एवं क्लोजिंग रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं. सर नमस्कार. आज के वेबिनार की इस क्लोजिंग सेशन में उपस्थित हम सभी के नेता, देश के आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, देश की माननीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री आदरणीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, श्रम तथा रोजगार नियोजन विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, स्किल डेवलपमेंट तथा एंटरप्रेन्योरशिप विभाग के मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी, नीति आयोग के आदरणीय सदस्य, सभी विभागों के आदरणीय सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, ये मेरे लिए अत्यंत सम्मान की अवसर है. पोस्ट बजट वेबिनार की क्लोजिंग रिमार्क को एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए दायित्व आप सभी ने हमें दिया है. मैं उसके लिए आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं. आज दिन भर की चर्चा में 7 मिनिस्ट्री की 12 बजट घोषणा के बारे में आज 11 कोहोर्ट में 11 ब्रेकआउट सेशन में दिन भर की चर्चा हुई. सुबह 11 बजे से शुरू होकर वर्तमान शाम 7 बजे तक ये वेबिनार बड़े सफलता के साथ चली रहा है. मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस वेबिनार में हम सभी को संबोधित करने के लिए आभार प्रकट करता हूं.
उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एजुकेशन, स्किलिंग, हेल्थ केयर और सोशल डेवलपमेंट पर अनेक मूल्यवान सुझाव, जब वेबिनार की विषय इन्वेस्ट इन पीपुल ही है, उसमें ये सारे सुझाव उनकी बहुत महत्वपूर्ण ही है। यह सभी एक सेल्फ रिलायंट और प्रोग्रेसिव भारत बनाने के दिशा में एक कलेक्टिव आइडियाज की मंथन हम लोगों ने दिन भर किया है। हम सभी के लक्ष्य विकसित भारत 2047 ही है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, इन्वेस्टिंग इन पीपुल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन ही विकसित भारत का ही मंत्र है। इन्वेस्टिंग इन पीपुल, ये एक जन आंदोलन की रूप इस बजट में दिखा गया है। भारत की मानव संसाधन पूंजी ही है। हमारे देश की 140 करोड़ लोगों में से 35 साल की आयु में 60% लोग हैं, यानी लगभग 75 करोड़ लोग हैं। आज जो समूह की वेबिनार हुई, जो 12 घोषणाएं हुई, सबकी एक इंटरकनेक्टेडनेस है, सभी से जुड़ते हैं। सक्षम पोषण से लेके डिस्ट्रिक्ट सेंटर में डे केयर कैंसर सेंटर, माननीय नाडा जी को का काम आसान हो, भगवान सबको किसी को अवसर ना दे कैंसर सेंटर में जाने के लिए, लेकिन एक संवेदनशील सरकार के नाते सरकार सभी के लिए एक मानवीय अधिकार के नाते सभी प्रकार की व्यवस्था की चिंता की है। जिन विषयों पे आज चर्चा हुई है, महिला और बाल विकास विभाग की सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, स्कूल विभाग के अटल टिंकरिंग लैब, 3 विभागों की कलेक्टिव अप्रोच से टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलके ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड पीएससी, यही एक ही कदम आने वाले दिनों में भारत जब डिजिटल वर्ल्ड में अपना नई परचम लहरा रही है, मेरे को लगता है व्यक्तिगत रूप में ये एक ही निर्णय भारत की जन जन तक स्वास्थ्य सुविधा और ज्ञान प्रवाह ये एक नई ऊंचाई तक ले जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है, भारत एक युवाओं की देश होने के नाते स्किल हब दुनिया की भारत बने, और जिस प्रकार की रचना, जिस प्रकार की बजट अनाउंसमेंट हुई है, निश्चित रूप में 1000 ITI और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये निश्चित रूप में एक नई आयाम हमारी व्यवस्था में जुड़ेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं की एक महत्व बढ़ाई है। उसमें केवल भारत सरकार की एक स्लोगन नहीं रहा, भारतीय पुस्तक योजना ऐसे एक महत्वाकांक्षी योजना जिसके बारे में आज दिन भर चर्चा भी हुई है, आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। ये एक नई अध्याय हमारी पब्लिक पॉलिसी डोमेन में जुड़ रही है। हमारी IITs आज ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। उसमें हमारी 6 IITs में, 3rd जनरेशन IITs में IITs की अपग्रेडेशन के लिए सीट बढ़ाना और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है। AI आज एक अनिवार्य व्यवस्था बन चुकी है। शिक्षा में AI, उसमें सहजता कैसे लेके आया जाएगा, इसके बारे में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने आप में खोलने की निर्णय किया गया है। 10,000 नए मेडिकल सीट्स इसी साल, जिसके बारे में माननीय नाडा जी एक विस्तार से उसकी वर्णन कर रहे थे। 10,000 नए मेडिकल सीट्स भारत की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में एक नई परचम लहराने वाली है। शहरी विकास विभाग की जो 2 महत्वपूर्ण घोषणा बजट में हुई है, स्वनिधि और अर्बन लाइवलीहुड, शहरी गरीबों की रोजगार के लिए समाज जीवन की अंतिम घटक की अंत्योदय हो, इस बजट की एक नई
उपलब्धि मैं मानता हूं। ऐसे ही एक वर्ग सहज उससे जुड़ती है, हमारे गिग वर्कर। श्रम विभाग ने उनके बारे में एक विस्तार से योजना निश्चित रूप में बजट के उपरांत पिछले लगभग महीने भर में बनाया होगा। मित्रों, जब हम देश की 75 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों की योजनाएं अभी हम लोग शुरू करेंगे, हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट हमारी पूंजी है, हमारी सामने एक संवेदनशील गवर्नमेंट की योजना है और इस बार बजट में ज्ञान को ही आधार माना गया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये इस बार की बजट की जो मैंने 12 घोषणा बताई, 7 विभागों की सामूहिक प्रयास बताई, इस ज्ञान को और मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने विषय रखा है और मैं फिर एक बार उनको धन्यवाद दूंगा। उन्होंने स्वयं आज वेबिनार में आके इस सेक्टर की प्रमुख पॉलिसी स्टेक होल्डर के सामने अपना विचार को रखा है। पिछले महीने भर में कई प्रकार की चर्निंग हुई है, विभागों ने अपना अपना योजनाओं को रूप देने लगा है, एक्सपर्ट्स अपने सुझाव भी दिए हैं और ग्रेटर सोसाइटी उसको स्वागत भी किया है। मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। अटल टिंकरिंग लैब को एक पिछले 5-7 साल में 10,000 संख्या तक पहुंचाई गई थी। इस बार की बजट में उसको 50,000 करके देश की किशोर बालक बालिकाओं के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर को नई दिशा देने के लिए इस बजट ने योजना बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द संयोजना किया है, एजुकेशन टूरिज्म। ये निश्चित रूप में आने वाले दिनों में ये सारे स्टेक होल्डर्स उसकी परिभाषित करने में काम पे लगेंगे। ये बजट सर्वांगी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी ये हो, इसकी अपेक्षा सबकी है। कई विषयों के साथ साथ एआई पे आज हम सभी को, कभी कुछ साल पहले औद्योगिक क्रांति की किसी क्षण में हम लोगों को बिजली एक गेम चेंजर हुई थी, एनर्जी गेम चेंजर हुई थी, सुपर कंप्यूटिंग भी एक गेम चेंजिंग इनोवेशन हुई थी, इंटरनेट उसको आगे बढ़ाया था, अभी एआई उसको मल्टीप्लाई करने वाला है। सभी विभागों के अंदर एआई के दक्षता ज्ञान बढ़े, ये इस बार की बजट की एक महत्वपूर्ण आयाम है। मित्रों, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम लोग काम करें। और मैं अंत में इतना ही कहूंगा, बहुत विचार विमर्श हुई है। भारत सरकार की सभी जिम्मेवार अधिकारी, भारत की सभी प्रमुख पॉलिसी स्टेक होल्डर्स इस वेबिनार में इन्वॉल्व हुए हैं। मैं इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए उसकी उस आंकड़ा की उल्लेख करने की मोह में नहीं हूं, क्योंकि अभी अभी मैं दिन भर जो समझ रहा था, नंबर्स बढ़ते जा रहे थे। शायद कल तक उसकी एग्जैक्ट पार्टिसिपेंट विभाग वाइज अपने अपने सेक्टर से सब लोग बताएंगे, लेकिन मेरा अंतिम निवेदन रहेगा, मैं माननीय नाडा जी के सामने उसका धृष्टता करूंगा कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी कई सालों से प्रयास करके बजट को 1 महीना आगे लिया है। फरवरी 28 आज बजट की तिथि बनी है, आज हम लोग मार्च 5 में बैठे हैं। पिछले 1 महीने में बजट की स्ट्रैटेजी, बजट की प्रायोरिटी, बजट की फोकस की भरपूर कम्युनिकेशन नीचे हुई है। इस सीरीज ऑफ वेबिनार उसको और स्पेसिफिक तक ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा फिर भी हमारे हाथ में 1 महीना और है। 1 अप्रैल को नए, और इन दिनों में सारे राज्यों ने भारत की पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस में एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। राज्य केंद्रीय बजट फरवरी में आने के बाद हम उसको पारित करने के लिए अभी 10 मार्च में बैठेंगे। शायद ये अप्रैल प्रथम सप्ताह तक ये पारित भी हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल को नया बजट से खर्चा करने की व्यवस्था हमारे हाथ में पहुंच जाएगी। और इस महीने, इस 1 महीने में हमारी पुराने हिसाब किताब को भी पूरा करना है और नई ऊर्जा के साथ हम लोग इस वेबिनार तब सफल होगा अगर हम जो घोषणा हमारी जिम्मे में है, हमारे लिए विकसित भारत, भारत की सभी हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेट पहुंचाने वाला डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन है,
उसके लाभार्थी बनेंगे सारे पीएससी और सारे हाई स्कूल्स, दोनों लगभग देश में अमूमन एक ही जगह पे होते हैं। इसको एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में कैसे हम लोग काम करें। 10,000 नए मेडिकल सीट बढ़ेंगे तो एनटीए की जिम्मेवारी बढ़ जाती है और बढ़िया परीक्षा करवाने के लिए। हमारे देश में पिछले 10 साल के प्रयासों से लगभग 1,10,000 सीट्स 50,000 से बढ़ के 1,10,000 सीट्स हो गए हैं। ये इस बार बढ़ के 1,20,25,000 तक पहुंच जाएगी। जब सब लोग हम मिलके काम करेंगे, 1 अप्रैल से बजट को खर्चा करने की नई आइडियाज के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब जाके ये वेबिनार भी सफल होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हम लोगों के लिए मार्गदर्शन रहा है, बजट को समझो, समझाओ और क्रियान्वयन करो, इसी 2 शब्द के साथ मैं सभी को फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं सभी के पास कि आप लोग आए, दिन भर जुटे, इस विमर्श को किए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब इस समापन सत्र के में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगणों, सभी सचिव गणों को उनके बहुमूल्य समय और उनके उद्बोधन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर मैं इस सत्र तथा प्रत्येक ब्रेक अवे सेशन में भाग लिए सेक्टर एक्सपर्ट्स, पैनलिस्ट एवं विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े सभी प्रतिभागियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही इन्वेस्टिंग इन पीपल थीम पर कई टेक अवे के साथ इस सत्र की समाप्ति की घोषणा करता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।